करेंगे। आप बोलो एक बार। लाइव स्ट्रीम शुरू हो गया है। The live stream has begun. एक बार आप बोलो तो नहीं जा रही ना? नहीं आपकी जा रही, मुझे आ रही है। जा रही है, आपकी आवाज जा रही है। All Dayamani has said that she's joined, but she must be on another name. So we are live streaming now. We can start. Cannot start video because our host has disabled it. दोनों ने बंद कर रखा है, वो ऑन करेंगे। हाँ, आप बोलो। हेलो। कोई नहीं, अभी आप म्यूट कीजिए क्योंकि लाइव हो गया है। बिना जी Now. मेरी आवाज बोलो। हेलो हेलो बिना जी प्लीज म्यूट कीजिए क्योंकि अभी लाइव हो गया है। Paul, you can start now. Friends, it is the last day of the Janta Parliament and last Adivasi Dalit session. And we know that in the last 4 months during this pandemic, it's very disturbing that the Parliament has not taken hold and seized of these issues and has not had a sitting. How will this country, which is a democratic country, be able to function without the people's representatives finding out what is actually happening? In sometimes we know the voices of the people can be heard, but our voice, the Adivasi voice and the Dalit voice, which is really stifled during this period. And our parliamentarians find it very difficult. And in this time, we find extremely disturbing. And it is not in the democratic principles not to have the parliament. So we are here again on the 5th day, having the voices of the Adivasis, representatives of the Adivasi movements, activists, academics, and also the Dalits and the disability and the other vulnerable communities, trying to raise our concerns and pass resolutions today. So before we begin, we'd like to remember very fondly and celebrate the life of Dr. Abhay Kaka. Has been an Adivasi activist, intellectual, one of the first ones to come out and go for very higher studies, doctoral studies outside. And he has worked hard for the issues of the Adivasis and the Dalits and bringing them together. And I would request the organizers to put his picture and maybe have a minute of silence to celebrate his memory. Can we have the picture of Dr. Abhay Kaka, please? We recall his poem where he has challenged many others who has used and abused the community, saying, I'm not your data, nor am I your vote bank. I'm not your project, nor any exotic museum project. I'm not the soul waiting to be harvested, nor am I the lab where your theories are tested. We are a people, we are a community, we have history, and we have claims that yet to be seen. Friends, we once again welcome you and request the organizers for the translation. Nachiket, Nancy, would you kindly inform the
people of the translations available? To listen in English, please choose English, and to listen in Hindi, please choose Japanese. इंग्लिश में सुनने के लिए इंग्लिश पे क्लिक करें और हिंदी में सुनने के लिए जापानीज पे क्लिक करें. ये नीचे एक ग्लोब जैसा बन के आ रहा है, उस पे आपको क्लिक करना है. Thank you for that. And we will have this again for the viewers who are joining in a little delayed. We have a very august body of Adivasi and Dalit speakers to share the concerns. First, may I call upon Ms. Dayamani Barla. She's the convener of Adivasi Mulvasi Astitva Raksha Manch, and she will be highlighting on the tribal land issues. May I request all speakers to limit to 7 minutes. I will be clocking because we have a series of speakers from the other identities also. So we need to respect them. So kindly limit your sharing to 7 minutes. Over to you, Dr. Dayamani Barla. Paul, I think there is some connection problems on her end. So can you go on to the next? So can I ask Dr. Vincent Eka? I saw him in the panel. And also Gladson is also joined. So, okay. Dr. Vincent, if you can put on your video. Vincent Eka is the head of Department of Tribal Studies in the Indian Institute of Indian Social Institute. And yes, if we can request Dr. Vincent Eka, please. You have to turn on your video. Okay. Good morning, everybody, and Johar. I'm asked to speak today on new education policy and education of indigenous peoples in common. No. What happened? Hello, am I audible? No, it started. Paul, we can hear you. You have to mute yourself. Dr. Vincent Eka, please go ahead. Okay. So I'm very thankful to you all, the organizers, for this opportunity and very relevant topics that we are going to discuss today. And I'm going to bring out some points about the new education policy that has been passed by the cabinet now, and I think it is already in the process of implementation. There is a lot of fear and cheer after getting this policy document, and also people from all corners are looking for it with some kind of apprehension and also expectation. 60 pages document seems to be full of tall promises for the all communities, including the marginalized sections and poor people. At the same time, there are many loopholes, many dichotomies that we can foresee from this policy. The very big claims that are being made through this new education policy is a kind of inclusive policy, which the Prime Minister calls this new education policy is going to make India a global knowledge superpower. And this policy is going to instill deep-rooted pride of being Indians. This is Prime Minister says that this policy is going to contribute to the transforming India into equitable, vibrant, and knowledge society. These are some of very tall claims and promises that sound very nice to hear, but again with a lot of fear and apprehension.
we have been witnessing at the grassroots level and in various communities how the education system is functioning. There are policies in place, there are also laws to be implemented, but in the grassroots level we find a lot of non-implementability and also neglect towards the education. And when it comes to the indigenous communities of this country, it is all the more we find that education is neglected in the rural areas especially. This talks about autonomy to different educational institutions, colleges and universities, and independence for them to even chart out their own syllabus and education systems. But again, there is no proper guidelines, or to say a roadmap as to how this new policy is going to be implemented at various levels in various communities. When it talks about the primary education to be imparted in their own regional or local languages, we know there are diversities in each country, sorry, each district, each block, and in every school we have candidates, the students who come from various linguistic families and groups. And to implement one language or one regional language, or for example, if we have students belonging to 5 language groups in one class, are they going to employ 5 teachers to teach 5 languages in one class? If we are talking about regional or local language compulsorily in primary sections, we see there are attempts being taken in different parts, in different schools, to teach regional and local languages, especially the tribal languages in many schools in Jharkhand we see, but there is no support and promotion from the side of the government. So we see how much these initiatives have been neglected, and now the state and the policy is talking about upholding the same kind of a thing, which without any clear roadmap and guidance. Then it talks about the new policy is talking about that it is going to promote the critical thinking. This is again very good to hear that we need critical individuals to see everything in a very comprehensive and critical manner. But again, this criticality is questioned by the government itself. When we have many educational centers like JNU, DU, Hyderabad Central University, or Jamia Millia, or Allahabad universities, where students have questioned certain things. They have criticality in their training, and those very students who have questioned certain malpractices and non-implementability in the processes, they are labeled as very I mean, with very huge charges like anti-state, anti-national, anti-government. So those kind of labels are charged against those who have this kind of a criticality with regard to education, or even what is happening in the society. So I do not know what it means to promote critical thinking. It may be uh, upholding a particular type of ideology or mindset and criticizing the other who differ. That may be the meaning of critical thinking according to this new education policy. We do not know what is exactly the roadmap and implementation, the process that they are going to. The policy also is talking about that it is going to promote Indian thoughts, ethos, and culture. In this definition of Indian ethos and culture, we are not very sure which cultures are included. There are diverse cultures in our country which also need recognition and respect, but we see there in the practice a particular biasness towards some cultures, and also
only one type of a trend, one culture or one type of ideology is promoted. So here again, when it says about promoting Indian ethos and Indian culture, then we are not very sure which culture this policy is talking about, whether the marginalized sections, the tribals and others, and their culture is included these cultural practices or ethos or not. We are not very sure. This is talking about education, quality education. That new education policy is going to implement quality education. What hinders the governments over the years to implement a quality education? They have policies and laws in place, but we don't see a kind of proactive participation of the policymakers and implementing agencies to have a quality education in our country, and especially when it comes to the rural and indigenous communities. We don't find these policies are really implemented. When we talk about quality education, we see on the other hand there are lack of teachers in the school, in the primary school, in the rural areas. There are only hardly one or two teachers managing the whole primary education in a school. So this is the dichotomy that we see. And sorry, yeah, time is up. my time is up. Yeah, please wind up. I mean, with these few sentences. Okay, one more minute. I'll just wind up. So there is a lot of dichotomy in the policy and practice in the ground we find, and therefore I would suggest that any policy, any law that is brought out, that should be really implemented in letter and spirit. That is lacking in our country. When we talk about quality education, we should ensure that all schools are equipped with adequate teaching facilities and teachers, trained teachers. Also, there are thousands of posts vacant in the universities and colleges, and they are managing with some kind of ad hoc teachers and so on. And we talk about quality education. This looks a kind of blatant lie and kind of cheating of the people of the country by throwing big promises and showing dreams like. And we see in the education sector the expenditure is very low. Only 3% according to economic times 2018 and 19, we had only 3% of GDP spent on education, and now the government is saying about 6% it is going to spend, which is also not much. But when they are talking about good education, good expenditure, they should also ensure the fellowship for the students. We have in the universities the students from poor background, they are languishing for fellowship for 1 year or more than 1 year to get their fellowship. Where is a kind of expenditure the state is talking about? So there is a lot of doubt and fear about this new policy. I think we expect honesty and integrity on the part of the state to really implement the new education policy. Then only it becomes really inclusive and quality education, which includes all. And many areas which are not included, like critical areas like women's studies or gender studies, are not included in this new policy. We have no inclusion of a study of discrimination and exclusion. So some critical areas are not included. Yeah, okay. So here I wind up. We can later on discuss. Thank you. Sorry, there is so much of insights that we still have to see in this new education policy. Thank you very much, Dr. Eka, for bringing out that though it sounds good, though both in the allocations in ensuring that there are not enough fellowships, the quality, especially when it comes to pathshalas, Adivasi pathshalas and others, are not really geared towards the Adivasi community. So thank you very much for bringing this out. I'm sure you'll have a resolution on this. I wonder if Dr. Dayamani Barla is... Yes, I think she's on Redmi. Dayamani ji, आप unmute कीजिए. Dayamani ji.
Can you test her out while we go to another speaker and come? Yes, yes, please. Yeah. Please do the testing. May I request now Mr. Dr. Gladstone Dungdung to speak. Gladstone Dungdung is a human rights activist, has been raising several issues for the last 2 decades. Researcher, writer, motivator, public speaker, founder of Adivasi publication, Adivasi Hunkar, and he is the founder of the Jharkhand Human Rights Movement. He'll be speaking on tribal identity. Over to you, Dr. Gladstone. You have 7 minutes, Gladstone. Hello, Johar to all of you, and I would really thanks the organizer for providing this opportunity. Can you put your basically, video on, Gladson? hello. Your video, Hello? we can't see. Oh yeah, yeah. Okay, is it available? Yes, we can see you now. Yes, thank you. Okay, yeah. So, Johar to all of you, and I would like to thank the organizer for providing this great opportunity. Today, I would like to talk about Adivasi identity precisely because there are 104 million Adivasi in India, and we have 7 ethnic communities, but still we are not recognized as Adivasis, or let's say as indigenous people, because if we go back to the history, we will find that in the draft of the Indian Constitution, there was a provision. In fact, in Article 13, subclause 5, the word Adivasi was used. In English, actually, Aboriginal was used. But unfortunately, it was amended. We don't know behind this event, Marang Gomke Jaipal Semunda, he raised this issue in the Constituent Assembly. He said, why this Adivasi word is amended? Because we Adivasi do not feel, our connectedness or our belongingness with any other word. We are the Adivasis. So because of this identity crisis, when Constitution was enforced in this country, our identity was shifted from a communitarian society to the caste-based Indian society. That's how scheduled tribe in Hindi, Anusuchit Janjati. Jati word is also used for Adivasis. Though we don't belong to Jati, to caste system, we are not part of the caste system. But if you see for last 7 decades or so, since, formation of the RSS, they have been trying hard to put us in the Hindu caste system. They know that we are the indigenous people of India, and till they won't be able to claim themselves as a first, settler of India, till we, are here, and till we, fight for our identity. And because of this identity crisis, many people use it differently. For example, Gandhi used the word like Girijan, just $4. Similarly, like RSS using Vanvasi. Again, Prime Minister Modi uses one Bandhu. So we are, portrayed just as a forest dweller. It is kind of jungly, uncivilized, backward, and subhuman, and so and so. So our very identity of being the indigenous people of India was denied even in 1993. The representative of Indian government who had gone to UN, who denied our identity, is saying that there are no such indigenous people in India, but everybody is indigenous in India. This was, mockery to the identity of 104 million people. So
my demand would be the Adivasi word should be used, and scheduled tribe or Anusuri Janjati must be replaced from the Constitution of India, as it was put in the first draft of the Constitution of India. Because of this identity crisis, Government of India, though it is party to the UN Declaration on the Rights of Indigenous People 2000, still it is denying to ratify it, or it is not serious. The Government of India has been never been serious on Adivasi identity. Similarly, if you see that ILO Convention 107 or ILO Convention 169 were never ratified, because government precisely, or I can say deliberately, doesn't want to ratify it, because once if they ratify, our land, territory and resources would be fully protected. They won't be able to grab our land, grab our natural resources, or enter into our territories. That's why they don't want to identify ourselves, identify the Adivasi community as the indigenous people of India. So once we are identified as the indigenous people or Adivasi or Aboriginal of India, then our rights should be fully protected. Because if you see if you review any laws, for example, Forest Rights Act, or maybe a land protective law like CNT, SPT Act, or a Land Revenue Code of Chhattisgarh or Odisha, there are numerous laws who say that Adivasi's land cannot be alienated, or non-Adivasi cannot buy Adivasi land. But then our land, million and million acres of land were illegally grabbed, and then other lands were also grabbed under the tag so-called national interest or economic growth and development and blah blah. And then similarly, like Forest Rights Act, which guarantee, and it act was brought to right the historic wrong, but in the ground, what's happening? Our rights, forest rights on land, forest land is not being recognized. Our rights, community rights on forest and forest land is also not recognized. And then in fact, Government of India and the other state governments are jointly violating our protective laws. Like, for example, I would say Forest Rights Act. Why they are not implementing? Because if they implement, then there won't be coal block. Now they are sanctioning coal block, and then even privatizing the coal block everywhere. For example, in Jharkhand, I would like to quote, there is a village called Rinchi. So 72 Adivasis who were supposed to be given entitlement, the subdivisional level committee said they are supposed to be given entitlement, but when this claim was further sent to district level committee, which is higher authority, the higher authority said that since there is a coal mining, a coal block, therefore rights can't be given. This is clear violation of section 4(5) of the forest rights, because it clearly says no any developmental activity should take place till the rights, recognition of rights is done. But then Government of India is violating, or I would also say other state governments are also violating the laws which are passed by the parliament, for example, PESA Act or the Forest Rights Act and other land related acts. Therefore, everything will be protected if our identity, Adivasi identity or Adivasi people of India are recognized as indigenous people of this country. So this is why I keep demanding. Even last time I spoke to some parliamentarian, I told them, so they said that there would be a need to amend the constitution. So my argument is there has been amendment after amendment, various amendments on the Indian constitution. So why can't one more amendment be done in to protect the identity of Adivasis? So it must be done, because historically wrong it has been done again.
like when we say identity, again religious identity, I would also like to bring, like before when there was a British Indian government, Adivasis had a separate religious identity while conducting census. For example, like Hindu, Muslim, Christian, similarly Adivasi had their own column. But first time after independence in 1951, when census was done, Adivasi column was merged into Hindu column. So it was, systematically, or I would say organizedly, it was done to destroy the Adivasi identity. And not just RSS, but even the RSS people were a part of the Congress, I would say. And then every time they are, biting hard to destroy the Adivasi identity. So this is the right time when we should raise the question of Adivasi identity. Yeah, thank you very much. Thank you so much for really bringing out the issues of Adivasis and the resistance to be called only as forest dwellers, Vanvasis, Vanbandhu. I think you've really brought it up, all in the name of ensuring the territorial rights, the rights over the forest, and ensuring that the resources are really being taken away from you and making you homeless, and all in the name of identity and ensuring that you are merged with the major identity of Hindu religion. Thank you very much for bringing this out, Gladstone, and I'm sure this will be very strongly put in the resolution. I hope now we have Dr. Dayamani Barla on the screen. I have seen her, so if we can have Dayamani ji, please unmute and also put on your video. And you have 7 minutes, please. Thank you. I think she came in and now she's got logged off again. No, Oh, she's there. no, she's there. She's there. She's there. Yes. Dayamani ji. हाँ, मैं आप लोगों के पास हूँ। हाँ, चलो आप। मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ। ओके ओके, अभी आपका टर्न है, आप बात कीजिए प्लीज। आप बोलिए। अच्छा, कर दीजिए। मैं दिख रही हूँ। आपका वीडियो नहीं दिख रहा मैम। हेलो। हाँ, मैं अभी आप लोग नहीं दिख रहे हैं, आप लोगों का सबका ये मैं सुन रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एकदम अच्छे से आ रहे हैं, आप बात कीजिए प्लीज। तो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। जनता पार्लियामेंट में सभी साथियों को मेरा जोहार। मैं आदिवासी समाज, जल जंगल जमीन और उनके रिश्तों पर मैं बात करना चाहती हूँ। झारखंड की बात करेंगे या तो पूरे आदिवासी समाज की बात करेंगे। जल जंगल जमीन और आदिवासी समाज का अपना इतिहास है। जंगल को साफ करके गांव बनाने का, जमीन को आबाद करने का आदिवासियों का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। हमारे पूर्वजों ने सांप भालू बाघ से लड़के जमीन को आबाद किया और गांव को बसाया। और ने खेती की तारीख की बात करेंगे तो आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन के साथ रचने का, बसने का अपना एक इतिहास है। और आदिवासी समाज जल जंगल जमीन के साथ ही वो सर्वाइव भी करते आया है। आदिवासी समाज का भाषा है, संस्कृति और उनकी जो आजीविका और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था, वो अपना सामूहिकता पर ही जिस जंगल को, जिस जमीन को आदिवासियों ने साफ किया, उसमें उनका जो खुटखटी राइट्स माना गया और वो अपना ट्रेडिशनल राइट्स के अंतर्गत वो जमीन पर उनका अपना राइट्स हुआ। लेकिन ये आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन के साथ जो रिश्ता है वो एक धरोहर का है।
और वो कलेक्टिव धरोहर का है। लेकिन जब अंग्रेजों ने आदिवासी भारत में आए और आदिवासी इलाकों में जैसे जैसे उन्होंने पैर पसारते गए, इसको इंडिविजुअल राइट्स में बदलने का काम किया और आदिवासियों ने इनका पुरजोर विरोध करते गया और पुरजोर विरोध किया, जिसमें कि हम लोग सिद्धू कान्हू के झारखंड की बात करेंगे, अब में चांद भैरव और सिंदरा बिंद्रा, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, मक्की मुंडा और जतरा टाना भगत तक की लड़ाई और उसी सामूहिक धरोहर को बचाने का, आदिवासी भाषा संस्कृति को बचाने का ही एक लड़ाई था। और लेकिन ये आगे बढ़ता गया और जब आदिवासी समाज अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ में, उसको देखते हुए ही जब वो लैंड सेटलमेंट एक्ट शुरू हुआ तो जमींदारों ने भी आदिवासियों से जमीन ये रियलाइज किया कि आदि सुरक्षित रखना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 1908 में सीएनटी एक्ट को बनाया और उसके बाद एसपीटी एक्ट को भी बनाया। ने एक विशेष अधिकार दिया और उस की जो आदिवासियों की जमीन है उसको बाहर के लोग नहीं खरीद सकते हैं और ना वो उसको बेच सकते हैं, ये प्रावधान उसमें रखा गया। लेकिन आजादी के बाद जो कानून सीएनटी एक्ट, जिस सीएनटी एक्ट को आज की तारीख में भी हम लोग अपना सुरक्षा कवच मानते हैं, धड़ल्ले संबंधित कानून, लेकिन तमाम कानूनों का वायलेशन होते जा रहा है और तमाम कानूनों का वायलेशन होते होते आज यहाँ तक पहुंच गए हैं कि विकास के नाम पर आदिवासी 1 करोड़ से ज्यादा झारखंड के आदिवासी मूलवासी किसान अपने जल जंगल जमीन सभी स्थापित हो गए हैं। और जहां ये विस्थापन का सवाल है तो यहाँ पर सिर्फ आदिवासी समुदाय के बाद आज जब झारखंड अलग राज्य भी आदिवासी आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये 5वीं सूची का क्षेत्र आवाज की जमीन ग्राम सभा की इजाजत के बिना अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद या तो हम पेशा का भी मूल्यांकन करेंगे, तो पेशा कानून आने वाला साल 2021 में 25 साल हो रहा है, लेकिन उसमें जो प्रावधान है उसके को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई नियमावली भी बनी नहीं। और ये जो ग्राम सभा को जो अधिकार दिए गए हैं कि ग्राम सभा के सहमति के बिना कोई भी जमीन और जंगल का अधिग्रहण नहीं होगा, पूरी तरह से स्टेट के तरफ से और सेंटर के तरफ से इसका वायलेशन हो रहा है और सीएनटी एक्ट का भी वायलेशन हो रहा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का वायलेशन हो रहा है। और यहाँ पर हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन जितना जमीन यहाँ की जनता को जनता के भोजन के लिए चाहिए, खाद्य सुरक्षा की गारंटी के लिए करनी चाहिए, तमाम कानून का वायलेशन हो रहा है। आज गांव के भीतर फॉरेस्ट राइट एक्ट में, सीएनटी एक्ट में की बात करेंगे, 5वीं अनुसूची की बात करेंगे, तो उसमें एक राइट्स हमको जो मिला हुआ है उसमें कहा
गया है कि गांव के भीतर, सीमा के भीतर कि जितने भी जंगल है, जमीन है, नदी और पहाड़ है और पानी है, उसमें गांव वालों का वो सामुदायिक अधिकार है। लेकिन आज की तारीख में विकास के नाम पर कारपोरेटिव माने संस्कृति को लाने के लिए किस तरह से यहाँ पर जितने भी गैर मजरूह आम जमीन जमीन है, जंगल झाड़ी जमीन है, उसको भूमि बैंक के नाम से उसमें एक जगहरीकरण जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो जनसंख्या डुंगडुंग ने भी जिस बात को बात कर रहे थे कि जिस तरह से आदिवासियों की संख्या घटते जा रही है, तो उससे हमारा जो शेड्यूल इलाका है, उस शेड्यूल इलाका पर भी सवाल उठने लगे हैं कि इसको डिशेड्यूल किया जाए। आदिवासियों के लिए झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, सीट में से 28 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है और 9 सीट एससी के लिए। अब यहाँ पर आदिवासियों का संख्या घटते जा रहा है, तो उसमें भी लोग सवाल उठने वाला है कि आदिवासी जब घटते जा रहे हैं तो उनके लिए 28 रिजर्व सीट क्यों होगा। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम आदिवासियों को बचाना चाहते हैं, आदिवासी समाज को बचाना चाहते हैं, तो इसमें जो हमारा जो आइडेंटिटी जो खतरे में है, जिसमें जनसंख्या पर जो पूरी तरह से आधारित है और जनसंख्या ही सारा चीज तय करता है कि हमको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, राजनीति में क्या सुविधा मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को क्या सुविधा मिलना चाहिए, आरक्षण भी उसी से तय होता है। तो मैं आप लोगों आज के इस मतलब पार्लियामेंट से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आज हम अपना आइडेंटिटी बचाना चाहते हैं, तो हर हालत में आदिवासियों को एक मंच में आना होगा और जो संघर्ष अभी जल जंगल जमीन का चल रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने का चल रहा है और लोकतंत्र को बचाने का चल रहा है और डेमोक्रेसी को बचाने का चल रहा है, आदिवासियों को खुले मैदान में एकजुट होना पड़ेगा। और हर हालत में हम जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, हमें नहीं लगता है कि जो कानूनी दांव पेच है और जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है, वो ग्लोबल मार्केट को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। कल के दिन में हम कहीं पर भी नहीं रहेंगे, ना हमारा जनसंख्या बचेगा, ना हमारा खेतनाड़ बचेगा, ना हमारा जंगल जमीन बचेगा, ना हमारा भाषा और संस्कृति बचेगा। इसलिए मैं इस जनपंचायत के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी वह है वक्त कि हम एक मंच में आएंगे और हर हालत में जो हमारे ऊपर में जो हमारे एंटी माने पीपुल्स पॉलिसी जो थोपी जा रही है, उस एंटी पीपुल्स पॉलिसी को रोकने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। हम अपने जो व्यक्तिगत जो छोटे छोटे स्वार्थ हैं, उससे आगे निकल के राजहित में, राज के आदिवासियों के लिए, राज के किसानों के लिए, देश के आदिवासियों और देश के किसानों के लिए हम लोगों को एक मंच में हर हालत में आना होगा। अंतिम रास्ता आदिवासियों को बचाने का एक ही रास्ता है कि हम एकजुट हों, और एकजुट हुए बिना हम किसी भी हालत में अपने को नहीं बचा सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये जो तकनीकी व्यवस्था है, ये बड़ा हम लोगों के लिए, जो गांव में रहने वालों के लिए दिक्कत करता है। बहुत सारी चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, अब हम लोगों के लिए एक माने अंतिम अवसर मिला है कि हम लोग एक साथ आए और हर हालत में जितने भी एंटी पीपुल्स पॉलिसी हैं, इन एंटी पीपुल्स पॉलिसी का हम लोगों का पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप तमाम साथियों को मेरा जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया दयामणि जी. You've also really wonderfully shared the attack against the Adivasi community from all sides, grabbing the land, grabbing the resources, trying to take away the identity from the health side, on the entitlement side, on the community action side, and also divisive policies within the Adivasi communities. I think, thank you very much. It is so nice to hear your powerful presentation. I'm sorry we cannot have more time, but I'm sure we will hear you back again. Thank you very much. May I request now Dr. Chauhan to speak, and kindly put your unmute yourself and also the video.
अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे है। चौहान जी। अब ठीक है? यस यस। अब दिखाई दे रहा है सबको? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, सभी को जोहार। पॉल जी आपको भी जोहार। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का कार्यक्रम में भाग लेने का एक अवसर मिला, और इसीलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों ने इसके लिए असम के बारे में भी जानने का कोशिश किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग असम में अभी भी हम लोग का जो जनजातिकरण का मुद्दा है, अभी तक हम लोग जनजाति नहीं हुए हैं, फिर भी हमारा लड़ाई जारी है। आपको पता है कि हम लोग छोटा नागपुर बेल्ट से लगभग 18वीं शताब्दी में असम हम लोग आए थे। एक दो तरह का प्रथा के जरिए से हमें लाया गया था। इधर कोई टुक टुक कर रहा है, चलान, दूसरा था गिरमिटिया चलान। मैं चलान के जरिए हम लोग रोजगार की तलाश में इधर में आते थे, और आके हम लोग सिर्फ चाय बगान में बस गए। यहाँ पर असम में लगभग 855 चाय बगान है, और उन्हीं चाय बगान में हम सारे आदिवासी रहते हैं। और नजदीकी के जो भी गांव हैं, जो भी चाय बगान से रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायरमेंट लेने के बाद में वो उस नजदीकी गांव में, जिसको हम लोग सीलिंग हेक्टर जमीन कहते हैं, उसमें जाके वो लोग बसते हैं। अभी पिछले बार जब 2019 की बात है, हम लोग का ये आंदोलन, जितना सभी लोग अपना अपना संगठन आंदोलन को कर रहे हैं कि हम लोग को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, तो इसी का मद्देनजर रखते हुए 9 जनवरी 2019 को उस समय का जो केंद्रीय जनजाति मंत्री थे माननीय जुएल राम जी, उन्होंने एक द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2019 वो लाया था 9 जनवरी को। वो राज्यसभा में उन्होंने टेबल किया था कि असम के लगभग 36 जो भी जनजातियां हैं उनको जनजातिकरण देने को लेकर, जिसमें हम लोग को दिया गया था माल पहाड़िया, कंवर, लोधा, बैगा, नागासिया, भील, गोराइट, हलवा, माजवार, धनवार, असुर, प्रधान, खोंड, कौरवा, खेरवार, चेरू, कोया, बीहोर, परजा, मिर्धा, किसान, चीकबड़ाई, कोल, सांवरा, बिरजिया, धमदारी, बोंडा, माहिली, सोबर, खाड़िया, गोंड, मुंडा, उरांव, बेदिया, संथाल और भूमिज। इन सभी कम्युनिटीज को जनजाति देने का उन्होंने एक बिल को लाया था कि हमारे लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर था, बिल इसको लाना चाहिए, हम लोग को जनजातिकरण देना चाहिए, लेकिन वो बिल सिर्फ बिल ही रह पाया, और अभी तक वो कुछ भी उस तरह का कार्य नहीं हो पाया। फिर भी हम लोग का असम में अभी भी आंदोलन जारी है, और इसी को लेकर बहुत ऐसा आंदोलन हुए जिसको लेकर हमारे कई विद्रोही संगठन भी इसमें जन्म लिया, जैसे कि आपा आदिवासी पीपल्स आर्मी, अन्ना आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, बीसीएफ बीसा कमांडो फोर्स, एसटीएफ संथाल टाइगर फोर्स, कोबरा आदिवासी कोबरा मिलिटेंट ऑफ असम। इस तरह का कई संगठन जन्म लिया, क्योंकि उन लोग का विश्वास था कि जब सरकार हम लोग का इस तरह से नहीं मानते तो हमें हथियार उठाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। लेकिन उन लोगों के साथ में 2012 में 24 जनवरी 2012 में उस समय के माननीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम के और हमारे असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी के साथ में इन सभी 5 संगठनों ने, अस्त्र विरोधी संगठनों ने अपना अस्त्र जमा किए, और सरकार के साथ कुछ बातचीत के माध्यम से वो अपने समस्या को समाधान करने के बात को लेकर आगे बढ़े। लेकिन फिर भी सरकार उस पर अपना ध्यान नहीं दिया। उन लोगों से हथियार तो रखवा लिया, हथियार डाउन करा लिया, लेकिन उनके बातों का, उनको जो मुद्दा था उन मुद्दे को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ 2012 में से लेकर अब तक उनके साथ सिर्फ 3 बार ही बातचीत किया। जिस टाइम शंभू सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट देखते थे गृह मंत्रालय के, उन्हीं के साथ सिर्फ 3 बार बातचीत किया, और 3 बार बातचीत के दौरान ऐसा कोई नतीजा नहीं निकला, और अभी आज 2020 चल रहा है, फिर भी देखिए उन लोगों अभी तक मतलब ऐसे बातों को रखा है कि कोई वैल्यू देने का वाला बात नहीं है। लेकिन जब वोट के समय आता है तो उन्हीं संगठनों के पास में ये लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं कि हमें वोट चाहिए,
हमें वोट चाहिए। सिर्फ हमारा के लोगों को सिर्फ वोट बैंक बना के रखेंगे या आगे भी हमारे लिए कुछ करेंगे? आज आप गिनती के हम लोग का आईएएस ऑफिसर है, गिनती के आप आईपीएस, हमारे असम में अगर आप देखेंगे ना पढ़ाई के नाम में कुछ कर रहा है, ना आपका कोई, हम लोग का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत सारे दिक्कतों में हम लोग जी रहे हैं। अभी अगर आप हम चाय बागान में आप हम लोग को देखेंगे तो हम लोग का जो लाइन क्वार्टर है वो भी जैसे तैसे हालात में हम लोग चल रहे हैं। 1951 में जो प्लांटेशन लेबर एक्ट है वो भी अभी तक हम लोग को यहाँ पर अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग को बहुत सारे ऐसा दिक्कतों का सामना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर वो लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोगों का 2021 में फिर से अभी इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो लोग ऐसा बहुत से वादे किया था कि हम लोग आप लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अगर हम लोग दिहाड़ी दिन हाजिरा की अगर बात करें चाय बागान के क्षेत्रों में, तो वहां पर सिर्फ 167 रुपया दिहाड़ी मिलता है, जो कि राष्ट्रीय मानक का जो एक सिस्टम है वो भी नहीं हम लोग को मिलता है। तो आप लोग खुद सोच के देखिए कि हम लोग जिए तो कैसे जिए? 167 रुपये में कुछ होता है अभी के समय में? ऐसा हम लोग को जिंदगी, अगर 167 रुपये उनको मिलेगा तो वो अपने आप को, बच्चे को कैसे आगे एजुकेशन दे पाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ा पाएंगे? तो सरकार भी इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और जो भी उन लोग का सिस्टम का जरिया है, और भी हाँ, उन लोग का टी ट्रेड डिपार्टमेंट है हमारा यहाँ पर, तो उनके जरिए कुछ कुछ स्कीम वो लोग दे रहे हैं, क्या वो स्कीम सभी तक पहुंच पा रहा है? ये भी उन लोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आगे ऐसा भी, और हमारे जो भी संगठन है उन संगठनों के साथ उनको बैठना चाहिए, और हमारे जो भी विद्रोही संगठन है वो एटलीस्ट उन लोग जो कैडर है, कैडर को लेके सरकार को कम से कम आर्मी में उन लोग को भर्ती दे या पुलिस में उन लोग को भर्ती दे। सिर्फ अभी उन लोग को पहले 3000 रुपया महीना मिलता था एक आपका स्टाइपेंड, और अभी उसको बढ़ा के 6000, क्या 6000 में कुछ होता है? यह भी एक सोचनीय विषय है, तो इसके ऊपर भी उन लोग को ध्यान देना है। फिर बोला कि उस टाइम में 2012 में कि आप लोग को हम लोग कॉम्पेंसेशन एक वन टाइम ग्रांट देंगे, लेकिन वन टाइम ग्रांट क्या दिया? 1 लाख दिया, वो भी लोन दिया, वो भी स्किल डेवलपमेंट के, आपको मुर्गा पालना है, हांस पालना है, छगरी पालना है, ये सब को लेकर उनको पैसा दिया। तो एक तरह का झूठे वादे के साथ में काम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लेकिन कितना दिन ऐसा करेगा? समय एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन लोगों को भी मजबूर होना पड़ेगा। चौहान जी, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम लोग को मौका दिया बोलने के लिए। मैं सभी को पुनः सबको मैं जोहार कहता हूं। धन्यवाद, जोहार। Thank you, Chauhan ji. Chauhan ji is an activist leader of the T tribal identity rights movement, which is, within the tribal identity, many of you know that the T tribal identities, and he has listed out several of these identities of tribal identities, communities from all over the country have been transported to Assam and the Northeast, and their rights have not been recognized as tribals. And not only rights have not been recognized, no development schemes and not enough development schemes are being reaching them, and he has really clearly narrated. Thank you very much, Chauhan ji. Johar. Friends, we are now having a quick video on the NT-DNT tribal issues. I request the organizers to play that video. After that, we have a very powerful speaker, Mr. Mahendranath from the community. Are we having the video? हेलो, मैं महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, वीडियो के बाद आप स्पीक करना है। Just 1 minute. Let's have the video. After the video के बाद आप वीडियो चलेगा उसके बाद। I belong to Chamar community. There are 2 Brahmin families in neighborhood, and they have been treating us very badly because
We belong to the lower caste. Every day, they verbally abuse us and calls us Tumaran on our face. They threaten to throw acid on my face and kidnap my children. One of their daughters insists that her father get rid of us from the neighborhood by any means. This man warns us that he owns the entire street and that if anyone dares to question him, then he will shoot them down. He keeps a gun at his home and has been regularly threatening us. We have sought help from the police officers, but they have not yet responded to our complaints. It's NGNJ who has been providing us every possible assistance. Friends, that is the severe. Sorry, Paul, we're just showing the right video. By mistake, it was shown by this. I too was wondering why are you showing the chamar. Yes, yes. Sorry. Maybe you can go on to Mahendra Singh and then we can show the video. Thank you. Friends, we have now Mr. Mahendra Singh, leader of the Goman movement, the anti-DNT communities, and he will be speaking to us. Mahendra ji, आपके पास 7 मिनट है, so kindly stick to the limit. हाँ, नमस्कार सर। जनता पार्लियामेंट दरबार में जो आज मुझे बोलने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। ऑन कर दीजिए आपकी तरफ से। नमस्कार, ये जनता पार्लियामेंट दरबार में आज जो मुझे एंटी डीएनटी पे बोलने का जो अवसर दिया और ये जो मंच ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। घुमंतु समाज एक ऐसा समाज, हम लोग घुमंतु जो लोग हैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो ज्यादातर घुमंतु समाज यहाँ के लोग हैं। ये अपना भालू, बंदर, सांप वगैरह पाल के अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन अचानक भारत सरकार ने बिना कोई योजना लाए इनकी जितनी भी रोजी रोटी थी, इनके भालू, बंदर, रीछ वगैरह सारे छीन के वो जंगलों में भेज दिए और इनके ऊपर रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट गहराया। लॉकडाउन में भी इनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये लोग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। ये लोग ब्रिटिश के टाइम और मुगलों के समय में आन बान शान के लिए इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। अगर ये समझौता ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुगलों से कर लेते तो आज भी ये लोग राजा महाराजाओं की तरह जिंदगी जीते, लेकिन देश के लिए और अपनी आन बान शान के लिए जंगलों में भाग गए और जंगलों में भाग के इन्होंने मुगलों से और ब्रिटिश अंग्रेजों से इन्होंने गुरिल्ला युद्ध की लड़ाई ली और देश को आजाद कराने में इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार ने आज तक इनकी कोई नहीं सुनी। ये लोग कहीं जंगलों में, कहीं सड़कों के किनारे आज भी जीवन व्यापन कर रहे हैं और पुलिस इनको इतनी ज्यादती करती है कि इनको कभी भी उठा के जेलों में बंद कर देती है। तो क्राइम कोई और करता है, गरीब असहाय लोग होने के लिए, इसलिए इनको उठा के जेलों में बंद कर देते हैं। अगर कोई जैसे एक स्नेक चार्मर ही लगा लीजिए, स्नेक चार्मर को नाम दिया था सपेरा और स्नेक्स का, ये बहुत गहरा संबंध है। तो सिर्फ इन पे एक बीन रह गई और सांप इनसे छीन लिया गया, जबकि अभी भी सांप घरों में निकल रहे हैं, जंगलों में निकल रहे हैं, वही काम सरकारें कर रही हैं, इनसे उनका रोजगार छीन लिया। भालू, बंदर वो भी अभी जंगलों में है। जब भी बंदर वगैरह की संख्या ज्यादा हो जाती है तो इनको ठेकेदार कुछ लोग आते हैं और इनसे पकड़वाते हैं और वो हजारों लाखों रुपए नकार लेते हैं। इसी तरह
सपेरे जो लोग हैं और बड़े बड़े वो अपना जहर निकाल सके अगर सरकार चाहे तो, क्योंकि ये प्रोटेक्टर है। जंगली जानवरों को कैसे रखा जाता है, कैसे उनको समय पे खाना दिया जाता है, तो ये सब कुछ अच्छी तरह से उसको पालना जानते हैं। और चिड़ियाघर में इन लोगों ने रखा, अनट्रेंड लोगों को रखा है, जिसकी वजह से वहाँ हजारों जानवर जो है चिड़िया के जू में मर जाते हैं। अगर इन लोगों को सरकार चाहे तो रोजी रोटी वहाँ इनको जू में रख सकते हैं। इनसे जहरीले नागों का जो साइंटिस्ट आजकल जहर निकाल रहे हैं, ये लोग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पैदाइशी साइंटिस्ट है। लेकिन सरकारें जो है उनका फायदा नहीं उठा रही। और जब भी कोई स्नेक्स वगैरह भी निकलते हैं तो वही प्राइवेट एनजीओ उस काम को कर रहे हैं और इन लोगों से पकड़वा के इनको बहुत ही कम 150 रुपया दे के और इनको दे देते हैं और वो लाखों रुपए डकार रहे हैं। तो पिछले जब से सरकारें देश आजाद हुआ है अनेकों इन्होंने कमीशन बनाए हैं, लेकिन आज तक कोई भी कमीशन का कोई इम्प्लीमेंट भारत सरकार ने नहीं किया। एक इनको गुमराह करते हैं कि भाई हमने आपके लिए आयोग बना दिया, लेकिन रिजल्ट 0 है अभी तक। तो मैं चाहूंगा भारत सरकार से कि जितने भी आयोग बने, अभी लास्ट में इदाते आयोग बना है, उससे पहले रैन के बना है, उनकी जो भी रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये लोग प्रतिदिन डेली खाना अपना खाना रोजी रोटी कमा के खाते हैं। कई स्थायी ये रोग नहीं है, तो इनको इतना सामना करना पड़ रहा है कि आज ये भुखमरी के कगार पे है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनके लिए ऐसी योजनाएं लाए जाएं जो ये शिक्षा में भी और बहुत पिछड़े हुए हैं, इस तरह की स्पेशल योजनाएं लाए जाएं जो इनको बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। और इनको जितनी भी है जातियां हैं ये जनजाति में आनी चाहिए, जबकि इनको कहीं जर्नल में डाला हुआ है, कहीं एससी में डाला है, कहीं ओबीसी में डाला हुआ है, कहीं शेड्यूल कास्ट में डाला हुआ है, तो और कहीं तो इनको किसी भी जाति में नहीं डाला। उत्तर प्रदेश के अंदर सपेरा जाति को, जबकि 70 साल से वो घुमंतु जाति सरकारों से लड़ रही है कि आप हमें घुमंतु का या एससी का एसटी का दर्जा दीजिए, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में एक भीख मांगने वाले जिनका अधिकार है, जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और जिनको नहीं रिजर्वेशन, जिसके पास ताकत है उनको सरकारी रिजर्वेशन, उनके लिए कोई कमीशन नहीं बैठता। 1 मिनट के अंदर पार्लियामेंट में उनको कानून लागू कर दिए जाते हैं और जो ये बेचारे 70-75 साल से लड़ रहे हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं। तो आज मुझे ये बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद। और एक समय अब जल्दी आएगा, क्योंकि हमारा नाजायज फायदा उठाया है। कभी किसान के नाम पे हमें भरकर दिल्ली में रैलियों में भर लाते हैं, कभी राजनीतिक लोग गाड़ियों में रेलों में भर के हमें ले आते हैं, लेकिन हमने अपने लिए आज तक कोई डिमांड ऐसी नहीं रखी। तो हम लोग भी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। हम सबको, एक सारे आदिवासी भाइयों को कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एकजुट होना पड़ेगा। और जब तक हम अपने अधिकारों की लड़ाई अपने स्वयं के मंच से नहीं लड़ेंगे, ये सरकारें नहीं सुनेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। Mr. Mahendranath is Joint Secretary of Bharatiya Gobantu Samaj Panchayat, which is the All India Gobantu Samaj Panchayat. Very clearly narrated most marginalized among the SC community. Some of them are put in the SC list, some of them in the ST list. There has been a commissions has not been implemented, and there's no special provisions for this. There's still many of them are criminalized.
Mahinder, can I ask you to mute your phone, please? Mahinder, so now I think we complete. I do not know whether we have time for the video. Is there a video on? Are we showing a video of the? Yes, yes. Paul G, can you go to the next speaker? There's some technical issue. We'll fix it by the time the next speaker is done. Okay. Yeah. With this, we bring to an end the issues of the Adivasi community, including the Gomantu communities. And we have seen the range of issues, both land, identity, exclusion, and some of them further removed as tea estate tribal identities who are further not recognized as tribals within the tribals. Such a various spread of issues the parliament needs to be seized off. We will be having the resolutions towards the end. We had a video, but we are having some technical issues. So may I now request Ms. Beena Palikal. Hello. Yes? Yeah, we have the video ready. We can play it now. Okay. We'll have the video now of the DNT community's issues. Over to you, please. नमस्ते और सलाम। मैं नूर मोहम्मद जनता की संसद के अंदर आज का जो मुद्दा है वो समाज में कि किनारे पे बैठे हुए लोगों के बारे में है। मैं अपने विचार से जब सोचता हूँ कि समाज के अंदर आज कौन किनारे पर बैठा हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि समाज के अंदर किनारे पे बैठे हुए लोग वो हैं कि जो यतीम हैं। जिस बच्चे के माँ बाप मर जाते हैं हम लोग उसको यतीम बोलते हैं, और मैं उसको भी यतीम मानता हूँ कि इस भारत के अंदर इस भारत माता के ऊपर रहने वाले जाति और धर्म और समुदायों के लोगों के पास में ये माँ नहीं है। जिन लोगों के पास में ना खेती की ज़मीन है ना रहने की ज़मीन है, वो भारत के यतीम बेटे हैं। इस भारत माँ के ऊपर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है, और वो इस भारत माता के बेटे और अपने भाइयों के साथ में एक तरह से दोगला व्यवहार कर रहे हैं। सरकारें बनती हैं गरीबों के मुद्दों पर, गरीबों के नाम पर। सरकार का दावा होता है कि हम अंतिम छोर पे बैठे हुए आदमी तक हमारी योजनाओं को पहुंचाएंगे, लेकिन ये सिर्फ कहा जाता है, किताबों में लिखा जाता है, सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं। मैं नूर मोहम्मद 2006 तक भालू का खेल तमाशा दिखाने का काम करता था। मेरी जाति को कहीं मदारी, कहीं कलंदर, कहीं बाजीगर, कहीं वादी के नाम से पुकारा जाता है, और भारत के अंदर कई घुमंतू जातियां रहती हैं जो तरह तरह के काम करती हैं। कुछ लोग घुमंतू समाज के खेल तमाशे का काम करते हैं, कुछ जातियाँ दवा का काम करती है, कुछ जातियाँ बैलों का, घोड़े खच्चर के व्यापार का काम करती हैं, कुछ घुमंतू जातियाँ लोहे का काम करती हैं, कुछ घुमंतू जातियाँ भेरूपिया सांग बनाने का काम करता है, कुछ घुमंतू जातियाँ कठपुतली नचाने का काम करती हैं। We've lost the audio. एक गांव से दूसरे गांव, एक जिले से दूसरे जिले साल में 9 महीने तक घूमते रहते थे, और बरसात के 3 महीने में एक जगह रुकते थे। भारत के अंदर जब बदलाव हुआ तो ये घुमंतू जातियों के धंधे बंद हो गए। सरकार ने
वन्य जीवों के नाम पर जो जंगल के जानवरों से काम करते थे उनके धंधे बंद करा दिए और इनकी रोजी रोटी का जरिया ख़त्म हो गया। इन लोगों के हाथ में कटोरा है या प्लास्टिक का कट्टा है। ये लोग भिक्षावृत्ति के काम में सबसे ज़्यादा हैं, प्लास्टिक बीनने के काम में सबसे ज़्यादा हैं और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से ये लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इसलिए इस समाज के अंदर कई तरह की बीमारियां और कई तरह की बुराइयां भी फैल रही है। घुमंतु जीवन जीने की वजह से ये लोग पढ़ाई और लिखाई से भी हम घुमंतु समाज पूरी तरह से वंचित हैं और सरकार किसी भी तरह से हम लोगों को आगे बढ़ाने के कोई प्रयास नहीं कर रही है। घुमंतु और मुस्लिम घुमंतुओं में भी समाज ने काफ़ी भेदभाव किया हुआ है। राजस्थान की घुमंतु जाति की जो रजिस्टर है उसके अंदर 32 जातियां आती हैं और मुस्लिम घुमंतुओं को उस रजिस्टर के अंदर जोड़ा हुआ नहीं है, जबकि मुस्लिम घुमंतुओं का जीवन और हिंदू घुमंतु जीवन में खान पीन में, व्यवहार में, धंधा बिल्कुल एक जैसा ही है। और कई घुमंतु जातियों में तो आज भी मदारी हिंदू भी हैं, मदारी मुसलमान भी हैं, मदारी सिंगीवाल भी है और मदारी मुसलमान भी है। जैसे मोची मुसलमान है, मोची है। तो सरकार मुस्लिम होने के नाम पर भी भेदभाव करती है और किस तरह से भेदभाव करती है मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बतलाता हूँ। एक राजा ने एक बार ऐलान किया कि मेरे सर्दी की रात में मेरे तालाब के अंदर जो आदमी 12 घंटे पानी में रहेगा मैं उस आदमी को रहने के लिए मकान दूंगा, उनके बच्चों को पढ़ाऊंगा और उन लोगों को रोजगार दूंगा। इस ऐलान को सुनकर दो लोग एक गांव से चले, एक का नाम चांद था और एक का नाम सूरज था। वो दोनों पानी में जाकर खड़े हो गए, 12 घंटे पानी में खड़े रहे और सुबह जीवत निकले। राजा ने कहा कि भाई सूरज आप कैसे बचे? कि साहब मैं अपनी हिम्मत और ताकत से पानी में खड़ा रहा और बच गया। चांद से पूछा कि भाई आप कैसे? कि साहब मैं सारी रात चांद को देखता रहा और बच गया। तब राजा ने कहा कि भाई सूरज आपको तो पढ़ाई लिखाई, रोजगार, नौकरी सब कुछ मिलेगा, लेकिन चांद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी मदद चांद ने की है। आप सारी रात चांद को देखते रहे और चांद को देखकर ही आप ईद मनाते हो, इसलिए चांद ने आपकी मदद की है और मैं आपको किसी तरह का लाभ नहीं दूंगा। सरकारें भी इसी तरह से मुसलमान के नाम पे हमारे साथ में भेदभाव करती है और कुछ मुसलमानों को जो जातियों की सूची में बांटा हुआ है, जैसे एसी में है, कोई एसटी में है, कोई ओबीसी में है। अब अगर हम ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी के अंदर ऐसी जातियां हैं जो राज कर चुकी हैं। जैसे जाट समाज है, वो भी ओबीसी में आता है। अब एक जाट समाज से एक मदारी समाज का बच्चा कैसे परीक्षा में उससे मुकाबला करेगा, जिस मदारी समाज के बच्चे के पास में मकान भी नहीं है। अगर सरकार वास्तव में हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो मैंने एक बार पढ़ा था कि 12 डिस्ट्रिक्ट में शहरिया जाति रहती है और जो सरणी में वो आती है उसको सबसे पहले वहाँ पे 2 या 5% शहरिया जाति को आरक्षण का लाभ दिया जाता है। सरकार अगर ऐसे कोई नियम बनाए कि जिसके अंदर जो घुमंतु समाज ओबीसी में आता है या एसी एसटी में आता है तो उसको पहले जितनी उनकी जनसंख्या है उसके आधार पर आरक्षण दे तो घुमंतु समाज का भला हो सकता है। अगर सरकार हम पर ध्यान नहीं देगी, हम यतीम बना करके रखेगी, तो आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, लेकिन भारत के अंदर भिक्षावृत्ति करेंगे, प्लास्टिक कचरा बीनेंगे, समाज का कोई भी हिस्सा कमजोर रहेगा तो ये समाज सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much for this video, very educative video. It shows how graded inequality that we have made our society. Not enough you have Adivasis, not enough you have Dalits, who are almost at the end, but within those communities, you have again certain other communities
now being named as NT-TNT, they are criminalized, they are dispersed, and now across the country, they have been put into some into SC, some into ST, some into OBC. And as this video very clearly says, that some of them who have challenged the religion and have got Muslim identity, they are not given any kind of protection. What kind of an irrational terrorist kind of a thing that is being unleashed against NT-DNT communities? Any theft anywhere, they are lifted, and they are the ones who are there written as rowdy sheeters. So they will be taken back. Any theft anywhere in the country. And friends, with this, we bring close to the session of Adivasis. And now may I hand over the session to Ms. Beena Palikal, who will be who will be presiding over the Dalit community's rights. Over to you, Ms. Beena. Thank you, Paul. That was a really great session on the issues of Adivasis, tribals, and the DNT communities. Now we go over to the issues of Dalits. I have an outstanding panel that I'm very, very honored to present. We have Ms. Rita Kaushik from the Samudayak Kalyan Evam Vikas Sansthan, UP. She will be speaking on issues of violence against Dalit women. We have Sushma Kaithal, who's a young social justice lawyer from MP, who will be also speaking on access to justice, issues on legal rights for Dalit women. We have Ajay Kumar, who is heading rights in Kerala, who will who will break the myth of the Kerala model through a Kerala case story of impact of disasters on Dalits. We have Lee McQueen, who heads the National Dalit Watch, who will look at the inclusive disaster risk reduction and will give you a national picture. We then will show a video of a case, after which we will have Miss Lalita from Tamil Nadu. She represents SASI, an organization in Tindivanam. She will speak on the issues of manual scavenging. We have Kuldeep Bodh, who is from the Bundelkhand Dalit Adhikar Manch, who will speak on education justice on higher education. We have Chandrakanta Bharti, who will speak on school education. She's from the Center for Social Equity and Inclusion. We have Dr. Ramesh Nathan, who is from the National Dalit Movement for Justice, who will be presenting the resolutions at the end. Please stay on so that you can vote for the resolutions that we will pass today. And with us, we have our Honorable MP D. Raja of the Rajya Sabha. Sir I think has already joined us. Please stay on for this great panel. I would like to now call Rita ji. Rita ji, आपके पास 7 minutes है, who will be speaking on the issues of Dalit women. Unmute कीजिए और video भी on कीजिए, please. वीडियो आपकी तरफ से ऑन होगा, इधर से नहीं हो रहा है, please. Okay, can we switch on our video? And for those of you who have joined in late, जो लोग अभी join किया है, interpretation है नीचे. आपको अगर हिंदी का interpretation चाहिए तो Japanese choose करो. English, of course, if you want, choose English if somebody is speaking in Hindi. There is also sign language, as you can see on your screen. Start करें? जी रीटा जी. ओके, सभी को जय भीम. मैं इधर से वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है. प्लीज ट्राई अगेन. ओके, हाँ हुआ. या सभी को जय भीम. मेरा नाम रीता है और मैं एक दलित समाज से आती हूँ, दलित महिला हूँ और बुद्ध की धरती कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आती हूँ. दलितों का इतिहास रहा है और दलित हर जगह प्रताड़ित हुए हैं, ये सभी को पता है. न्याय प्रक्रिया कितनी जटिल है, न्याय नहीं मिलता है, तो इस पे हम बात करने वाले हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि सवर्णों का जो प्रताड़ना है वो हिंदू समाज उसका केंद्र बिंदु रहा है. विगत आधी सदी में भारत इतना बदल गया है जितना वो कई
100 सालों में नहीं बदला। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिखे संविधान, टेक्नोलॉजी, शहरीकरण, भूमंडलीकरण ने दलितों का दरवाजा खोल दिया है उनकी मुक्ति का। इस दौर में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। आजादी के हाईवे पर चल रहे दलितों का स्वागत नहीं हो रहा, बल्कि उन पर हमले हो रहे हैं। उसकी शिकार दलित महिला और अन्य दलित भी हो रहे हैं। बाबा साहब ने भले ही यह बात 20वीं सदी के तीसरे दशक में बताई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी सवर्णों की मानसिकता में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 21वीं सदी में दलितों के साथ वैसा ही सलूक देखने को मिल रहा है जैसा उनके साथ मनु काल में हुआ करता था। आज भी सवर्ण मानसिकता के लोग दलितों के साथ बड़ी क्रूरता और निर्ममता से पेश आते हैं। यह कटु सच्चाई है कि दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार देखकर सवर्ण मानसिकता से भरे लोगों का खून खौल जाता है। सवर्ण संरचना दलितों को अछूत और बंधुआ गुलाम के तौर पर देखने के अभ्यस्त रही है। वर्णगत और सवर्णवादी व्यवस्था की ओर से तय की गई परिभाषा पर जो दलित नहीं चलता, उसको सवर्णों के द्वारा सबक सिखा दिया जाता है। दलितों के लिए इससे बड़ी त्रासदी और पीड़ा क्या हो सकती है कि वे जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिसके लिए उन्होंने अपना खून और पसीना बहाया, मरने मारने को तैयार हुए, मारने के बाद सवर्णों के द्वारा उनके शवों को उठवा दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी यही चिंता रही है। हिंदुओं के शासन में दलितों की प्रताड़ना और अपमानित किया जाना अभी भी जारी है। 21वीं सदी में दलित महिला भी दलितों के साथ भी ये समाज वैसे ही पेश आता है जैसे मनु काल में दलितों के साथ व्यवहार किया जाता था। दलितों के प्रति घृणा का भाव चेतन और अवचेतन के स्तर पर हावी रहता है। लॉकडाउन के दौरान भी दलितों के खिलाफ, दलित महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार का तांडव था वो जारी रहा। औपचारिक कार्य क्षेत्र में श्रमिक, जिनमें से एक बड़ा तबका महिला थी, उनकी आजीविका संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई और साथ में उनकी आबरू भी लूटी गई। अब इसी के साथ में कुछ महिलाओं के साथ जो हिंसाएं हो रही हैं दिन प्रतिदिन, उस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी हाल में जुलाई में ही चित्रकूट में 12 से 14 साल की जो बच्चियां थी, जो दलित और ट्राइबल थी और पत्थर तोड़ने का काम करती थी, उनके साथ जो ठेकेदार थे उन्होंने उनके साथ यौन शोषण किया। 10 जुलाई को डीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में पहले ही घोषणा कर दी कि जिन लड़कियों को इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है वे लड़कियां झूठ बोल रही हैं। ऐसा हुआ ही नहीं है। इसके बाद मंडलायुक्त वहां जाते हैं और वो भी ऐसा ही जांच करके और बताते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये सब फिर जब इंडिया टुडे की रिपोर्टर जाते हैं तो सच में गांव के जो लोग इतने डरे हुए रहते हैं, प्रशासन उनको इतना डरा दिया रहता है कि वो झूठ बोलने पे आमादा हो जाते हैं और वो झूठ बोलते हैं सच में ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी घटनाओं पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। दूसरा, लखीमपुर खीरी की मैं अभी हाल ही में हुए घटना के बारे में बताना चाहूंगी, जो अभी अगस्त में हुआ है। निर्भया कांड हुआ तो पूरे देश की मीडिया, पूरे देश की जनता सब आक्रोशित थे, सब हल्ला मचा रहे थे क्योंकि वो बड़ी जाति की लड़की थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में जो दलित लड़की के साथ हुआ, जो 14 वर्ष की थी, उसको रेप के बाद उसका जीभ काट दिया गया, उसकी आंखें निकाल दी गई। इस पे ना तो मीडिया बोला, ना तो देश की जनता बोली और ना ही देश की सरकार। जब ये लोग गुहार के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस भी इनके परिवार को कोरोना पॉजिटिव बताकर इनको न्याय से वंचित कर दी जाती है। आगरा में जो अभी 19 अगस्त को हुआ, जिसमें पीजी की पढ़ाई कर रही योगिता गौतम के साथ जो हुआ, विवेक तिवारी ने जो किया, उसको गोली मारकर हत्या कर दिया। तो इस तरह से जो भी घटनाएं आज डे टू डे घट रही हैं। आगरा का एक उदाहरण है, जो एक दलित महिला की मौत हो जाती है और उसके शव को समड़ जाती है, उसके अंतिम संस्कार से रोकते हैं, यानी कि 2 गज जमीन भी दलित को देने से इनकार किया जाता है। दलित कहाँ जाए, कैसे
रहे, मतलब मरने के बाद भी उनको 2 गज की जमीन नहीं मिल पाती है। इससे पता चलता है कि देश में जाति व्यवस्था की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी और कितनी धंसी हुई। उच्च जाति के सवर्णों द्वारा दलितों को यह बार बार याद दिलाया जाता है कि देश में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। इसी तरह हमीरपुर में जो थाना चिकासी में दरिंदे ने घर में घुसकर किशोरी की आबरू लूटी और किशोरी अगर उसने विरोध किया तो उसके मुंह और सर में रिंच डालकर और रिंच से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। कानपुर देहात में भी जो सावनखेड़ा का मामला था, बमटा गांव में दलित के साथ एक मास अटैक होता है और उसमें बहुत सारी दलित महिलाओं को मारा जाता है, और उस समय मारा जाता है जब दलित पुरुष घर से बाहर निकल जाते हैं, अपने जॉब रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, तब महिलाओं पर यह हमला किया जाता है और 30 महिलाएं घायल होती हैं। इसमें एनसीडीएचआर की टीम ने इसमें पहल किया था और उन पीड़ितों को 30 लाख रुपए की मांग हुई थी और उनको मिला भी था। इसी प्रकार से जो उन्नाव में दलित बच्ची के साथ जो रेप हुआ और उसको फिर जिंदा जला दिया, मतलब इस तरह की घटनाएं हो रही है जिसपे आप कुछ कर नहीं सकते और प्रशासन कुछ सुनता नहीं है। कुशीनगर में एक दलित किशोरी के साथ रेप हुआ, उसका गला धड़ से अलग कर दिया गया है। एक किशोरी के साथ कुशीनगर में ही गैंग रेप होता है, उसको मरा हुआ समझ के खेत में डाल दिया जाता है, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है कि वो खेत से बह के सड़क पे आती है और लोग उसकी मदद करते हैं, वो जिंदा बच जाती है। लेकिन न्याय की गुहार में आज भी वो लोग वंचित हैं और 2013 का ये मामला है, जस्ट निर्भया कांड के 1 साल बाद का मामला, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिला। इस प्रकार सवर्ण मानसिकता वाली दलितों और पिछड़ों के सामाजिक और शैक्षणिक विभाग में सदैव अवरोध पैदा करते आए हैं। इसी मानसिकता के पक्षधर और समर्थक ने दलितों को बुनियादी हकों से वंचित करने का काम किया है। न्याय की पहुंच का सवाल पे हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्याय की गुहार में दलित वर्ग की महिलाओं को बार बार कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। तारीख पे तारीख मिलती है उनको, लेकिन कभी भी न्याय उनको नहीं मिलता। अंत में होता क्या है कि इनको होस्टाइल कर दिया जाता है, उनका सामंजस्य बैठा के पैसा लेन देन करके उसको केस को रफा दफा कर दिया जाता है, जिससे मतलब अंत तक उनको न्याय नहीं मिल पाता है। ये मेरा कहना था। थैंक यू अपॉर्चुनिटी के लिए। Thank you, Rita ji. I think she has very well brought out the instances of violence against Dalit women and how when the violence happens and when Dalit women also go to register case, how either there is counter cases filed or they don't accept the case or they say that they're lying. So this is the livid realities on the ground. Now I'd like to call upon, thank you very much, Rita ji. Now I'd like to call upon Sushma Kaithal, who's a young lawyer from MP. Sushma, if you can unmute yourself and also put on your video if possible. I know network का issue है वहाँ पे, लेकिन please try कीजिए. गुड जय भीम। जय भीम। हाँ। बीना जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वीडियो मेरी तरफ से नहीं ऑन हो रहा है। Yes, yes. If we can switch on her video, please. बिना वीडियो स्टार्ट किए मैं चालू करूँ? Please. क्योंकि वीडियो ऑन नहीं हो रहा है इधर से। ठीक है, ठीक है। जी। ट्राई कर सकते हैं आप, प्लीज एक बार और ट्राई कीजिए। जी जी जी, हो गया। ओके, स्टार्ट कीजिए। हो। आप सभी को जय भीम। मेरा नाम सुषमा है, मैं दलित समाज से बिलोंग करती हूँ और अनूपपुर जिले से, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से आती हूँ, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले सामाजिक न्याय के बारे में, जो दलितों का जिस तरीके से न्याय व्यवस्था में उनको न्याय देने में किस तरीके से दिक्कतें हो रही है, उनकी प्रक्रियाएं किस तरीके से आगे, रीता जी ने बहुत अच्छा बोला कि दलित के बारे में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके के मुद्दे पूरे देश भर में अपन को देखने को मिल रहे हैं। इसी को मैं एक अपना व्यक्तिगत केस के माध्यम से, दलित व्यक्तिगत केस के माध्यम से मैं अपना बात रखना चाहूंगी कि दिसंबर 2018 का मैटर है, दिसंबर 2018 का केस है, जिसमें नाबालिग दलित लड़की के साथ
रेप होता है और किस तरीके से वो बच्ची पहले से ही डरी सहमी हुई होती है, लेकिन उसको डरी सहमी हुई होती है और किस तरीके से वो डरने के बाद भी पुलिस वाले उसके परिवार, जो पीड़ित बच्ची है उसके परिवार वाले एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले वैसे भी एफआईआर दर्ज नहीं करते और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो पीड़ित पक्ष नहीं है, पीड़ित पक्ष का परिवार नहीं है, बल्कि वो खुद ही अपराध करके आए हुए हैं। इस तरीके से पुलिस का बर्ताव रहता है। और जैसे कि रीता जी ने बताया कि सवर्ण लोग, क्योंकि पुलिस विभाग में जितना भी, मेरे इस केस में तो जो पुलिस विभाग में है और न्यायालय में भी जो जीपी हैं, गवर्नमेंट सरकारी वकील हैं, वो चूंकि इस केस में वो सवर्ण जाति की ही है, तो इसमें जिस तरीके के दिक्कतें सामने आई है मैं वो शेयर करूंगी आपसे। कि एक तो पुलिस वहां पर दिक्कत कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, और किसी भी तरह वो बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज करती है। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद मामला मुद्दा कोर्ट में जाता है, फिर बच्चे से इस तरीके के बातें की जाती हैं जो उचित नहीं है कि एक पीड़िता से हम किस तरीके से बोल रहे हैं। कानून भी उसका सपोर्ट करने की बात करता है, लेकिन वहां पर उसके साथ सपोर्ट नहीं होता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसे वो खुद अपराध करके आई हुई है। और इसके साथ ही जब इस मैटर में हम आगे कोर्ट गए, जब हम जीपी से बात किए, जीपी से मिले, तो जीपी का सोच ऐसा है कि वो स्पष्ट सीधा सीधा कहते हैं कि जो SC ST होते हैं, जो दलित आदिवासी होते हैं, वो इस तरीके के केस जो आते हैं वो 90% झूठे होते हैं, उसमें फंसाने वाली बातें होती हैं, पैसे ऐंठने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। मतलब वो पूर्व धारणा में ही है कि SC ST का कोई मामला यदि आया है तो वो झूठा ही है, वो ये नहीं देखेंगे कि पीड़िता के साथ क्या हुआ। इस तरह की मानसिकता रख के यदि कोई सरकारी वकील किसी पीड़िता को की तरफ से खड़ा होता है तो वो उसको क्या उचित न्याय दिला पाएगा, किस तरीके से। और हमारे कानून में ये प्रावधान है कि मतलब सरकारी वकील, पीड़िता को जो भी वकील चाहिए वो खुद भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मतलब मौका नहीं दिया जाता उनको, जैसे थोप दिया जाता है, इस तरीके का है। हमारा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम है 1989, उसमें उसके अंतर्गत जो अनुसूचित जाति 1995 का, उसके अंतर्गत कंपेंसेशन की बात होती है। पर इस केस में जो मैं जिस पे चर्चा कर रही हूँ, उस केस पे दिसंबर 2018 का केस है, लेकिन वो उस केस में आज दिनांक तक कंपनसेशन अमाउंट नहीं दिया गया है, जबकि सीधा SC ST एक्ट कहता है कि अगर किसी पीड़िता के साथ, किसी के साथ इस तरीके के केसेस हो रहे हैं तो उसको अभी जो 2018 का अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद से पीड़िता को फर्स्ट स्टेज पे जब वो एफआईआर दर्ज होता है तो उसको 50% का अमाउंट, 50% जो कंपनसेशन अमाउंट दिया जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है आपको 25% उसको राहत राशि देनी होगी, लेकिन आज दिनांक तक उस बच्ची को कुछ भी राहत राशि नहीं मिला है। और इसके बाद हम इस मैटर पे सुषमा एक और मिनट। जी अच्छा, मेरे को बोलना है 1 मिनट के अंदर, सॉरी मैं समझ नहीं पाई थी। हाँ बस थोड़ा सा। तो उसके बच्ची को हम अजाक थाना गए, अजाक थाना के बाद हम आदिम जाति कल्याण विभाग गए, लेकिन वहां पर भी बैठे हुए जो लोग थे वो सवर्ण जाति के थे, तो इसमें टरका रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। इस तरीके से उस बच्ची को न्याय में, चूंकि इस तरीके के मैटर में तो तुरंत सुनवाई का, इस समय का जो निर्णय है तुरंत सुनवाई करना है, 60 दिन के अंदर आपका चार्जशीट पेश करना है, 60 दिन के अंदर सुनवाई कर देना है। लेकिन 2018 का मामला अमेंडमेंट होने के बाद भी वो अभी तक उस तरीके के केस में कोई नहीं हुआ है। मतलब कानून कुछ कह रहा है और हकीकत जमीनी स्तर पे कुछ और हो रहा है दलितों के साथ। तो इस तरीके का हमारे समाज में दलितों के साथ जो हम लोग एक भरोसा करते हैं न्यायपालिका पे, न्याय व्यवस्था पे, वो भी कहीं से दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि वो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़े हैं। तो
बस मैं यही कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमको इसमें हमारी इसमें ये कमी है कि हम जागरूक नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो हमको इसकी जरूरत है भी। जैसे हमको इसकी जैसे हम शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो हम आगे इस पे अपने लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं यही कहूंगी हमारे को हमारे संघर्ष जारी रखने होंगे। थैंक यू। आप बीना जी, आपको भी शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका देने के लिए, और जनता संसद के सभी साथियों को शुक्रिया। थैंक यू। जय भीम। Thank you, Sushma. I think very well spoken of the failure of the justice system, that how she has very clearly brought in the new amendments of the Prevention of Atrocities Act that has not worked in many of these cases. She's also a very young lawyer working in MP, and it's so encouraging to see young Dalit women fight against the system. More power to you, Sushma. I would like to now move on from access to justice or access to, violence and atrocities to disasters, floods, cyclones, COVID-19, many disasters we have seen over the years. And we have seen that there is a lot of exclusion during these disasters. So I'd like to first call on Ajay Kumar of the Rights Kerala to come to speak. You have 5 minutes, Ajay. We have to cut down the time a little bit, but I'm sure that within the 5 minutes, you'll be able to talk about the case. Ajay? Yes. Thank you, Bina. Sorry, I could not able to turn on my video. Yeah, I think they'll just give you permission. You can. I granted them the permission. You can just try now. Okay. Ajay? Yeah, but I think I am not able to do that. That's fine. I think let's speak. Okay. Please go ahead. Yeah, thank you, Bina, and thank you everybody for this opportunity. And we are in Kerala now sitting on the 14th day of the 4th disaster in a row. So we had 2018 flood, 2019 flood, in between COVID, now 2020, yet another disaster. And I would like to make only 3 points. One, we usually say, if all the reports we have, of the NCDHR that they brought out last 20 years on the inclusion and exclusion in the disaster, we usually start with that, disaster will not discriminate, but human does. But I would like to say disaster discriminate. That's what we have seen in a pattern emerging in last 3 years. Wherever a disaster occurred, the victims and the target communities always Dalits and Adivasis. 2018, if you look at the death toll, and 2019, look at the death toll, all the landslide, all of them, except I think 4 are Adivasis. And few days back, all of you know that those 84 people who had died in Munnar, all of them are Dalits. And that's my first point. And my second point is that is all about the development discourse about the so-called Kerala model. Those who are died in Munnar are nothing but people who are living in a slave condition. No, they are not even qualified to call them as modern slavery, their lives. They are actually very old kind of slavery, and the master decide where do they live, what do they eat, and where their children study. So those kind of living conditions where they push into the slopes of the mountains and the tea plantations, and they all of them become vulnerable for the landslide. And this is the reality, not only the Dalits in Munnar,
In fact, if you look at the flood situation or flood map in Kerala, those who are pushed the next to the river banks are Dalits or Adivasis. So this is a situation. So the point I am making is we also need to look at not only the post disaster situation, the pre-disaster situation also. There are factors and structures make our life vulnerable. And my third point is, though the national disaster policy, uh, the disaster management plan recognize inclusion as the one of the pillar of their approach, but unfortunately that pillar or the budgetary allocation not really translated. Though there are some flexi funds available for the disaster under the Disaster Management Act, there are hardly any allocation for inclusive, make sure inclusion in the state. Even in Kerala, as I said, we are today in the 14th day of the flood, and 8,000 families, and most of them are Dalits and Adivasis are went to the uh, uh, relief camps, and they all back to their shattered houses. Till date, government not announced any relief packages. So that's the state of affairs in the Kerala, so-called celebrated model in the country. I think this parliament, I propose, when we are having this resolution, we also make sure, want to make a point on this. And thank you very much, Bina. That's my 3 points. Thank you, Ajay. That was very short and crisp and kept to the timing. To see how the myth of the Kerala model, that finally, even in Kerala, which is celebrated as one of the greatest models, also have the issues of Dalits and Adivasis are still at a very bad shape. I'll now go to Lee McQueen, who will give a larger national level picture. Lee, you have 5 minutes. Please switch on your audio and video. Video, I'm not able to switch it on. Maybe because I don't have the lights. 1 sec. Yeah. Yes. Jai Bhim and Johar to everyone. And because I have less time, I'll come straight away to what I have to share with you all today. We talked about, Ajay has talked about the Kerala model after, and I'm supposed to be talking on the impact on Dalits and Dalits primarily, but Dalits and Adivasis of COVID. And Ajay talked about the Kerala model, how the disasters recently, especially from 2018 to COVID, have demystified this model of development, which has also resulted in exclusion of Dalits, just as it happens in any other part of the country. Likewise, to give a national picture of what has been the impact, well, I cannot say if anybody so far has really been able to document the impacts, but it is no difficult guesswork for us when we look at the situation based on the primary inclusion assessment that NCDHR has done across 14 states, and which have about 8 states with a significant number of households covered through a mobile-based application. We have seen that even though the government had announced stimulus package after the lockdown, this was on the 27th of March, majority of the Dalit and Adivasi households were left out. They were left out by default, and we have been saying this for years and years. They have been left out by default, by design, because the schemes that were announced, majority of these households are not even registered in these schemes. And it's ironic because each of these schemes, they consider the socioeconomic caste census as the data to enroll and prioritize the most vulnerable communities and the households for these schemes. And we are seeing that after 2014, all the new schemes that were announced, and even the old ones like Manrega and PDS, a huge chunk of the SCs and STs have been left out from enrollment, which means that they are obviously they're not eligible to receive the entitlements, the scheme, relief assistance for COVID that was announced post-COVID, post-lockdown. So one has been a extremely poor coverage
huge, or if I would say. Can you speak a little slowly because there's interpretation and they're not able to follow you. Yeah, sorry. So a huge gap in scheme coverage is noticed. And then the realization, obviously, when there is poor coverage, there will be poor realization also. So this has been the major trend when we were looking at the data from the 14 states, but mostly the topmost 8 states, which includes Kerala, Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, and other 4 states that are there, Orissa. And we see that wherever these states, where the situation is almost similar. And to talk about the impact was such that NCDHR, which is not a relief organization, we did see that immediately after the lockdown, our people were going hungry. They did not really have anything to bank on. Most of them we know, and because all of us know about the situation, economic situation of the Dalits and Adivasis in the country, because of their casualized form of occupation, they don't really have any registered, jobs with the government. And therefore, all the announcements, all the relief packages that were announced were only for those who were registered with some construction board. They were registered with some workers board, where our people were not registered. So eventually we saw that of all the various schemes, a basket of schemes that was announced, only few general schemes like PDS, pensions also, again, very poor realization. And most of these households had significant population of single or widow women, elderly, people with disability, and children. So it really did not help. These schemes did not help our people on the ground. And what we have heard from the previous speakers, both from the Adivasi speakers, the panel, and now what people will be speaking next, I would also request that this is the first time here at the Janta Parliament, we are talking about disaster as an issue, how it affects the SCs and STs. I don't think it has happened before, because disaster risk reduction has always been kept as one domain which does not come and fit in with the other development and rights issues and agendas of the Adivasis and Dalits. But I think here I would like to really appeal that each one of us, in the work that we do, all that we are doing, if our rights and entitlements are not protected, they're not safeguarded, if we don't have the basic social protection, social security cover, it means that our resilience, our capacity to cope with any disaster, be it a natural disaster, which we often face in several parts of the country almost annually, or a public health emergency like COVID, we will not be able to manage by ourselves. So which means that we have to bring in this perspective into our work, into our demand of strengthening social security coverage for our families, for the households, so they can withstand the effect of these disasters, these events that keep occurring now and then. So I think I would like to just close here saying that we have to bring in the DRR and also climate change adaptation, because much of our people, our communities, they actually work as landless laborers, as sharecroppers, and the National Disaster Response Fund, the general compensatory norms of the government of India, they don't have any measures, any mechanisms to compensate the losses of the informal sector workers, where most of our people will be working, even as migrant laborers or back in the rural areas. So I think this is something which has to be taken up and emphasized through other advocacy agenda and channels and windows that we approach to deal to dialogue with the authorities, and see that this resilience aspect, this perspective and angle of disaster resilience is built into our overall human rights advocacy on Dalit and Adivasi rights. Thank you. Thanks, Lee. I think very critical points there, that how do we have a contingency plan, not only when disaster strikes, but otherwise also, and to also build resilience within the communities in peacetime. I would now like to ask to play a video. Can we have the video up, please? It's a young Dalit woman who is speaking on the situation on the ground. My name is Sumitra. I live in Panipat. I belong to Chamar community. There are 2 Brahmin families in my neighborhood, and they have been treating us very badly because we belong to the lower caste. Every day, they verbally abuse us and calls us Chamaran on our face. They threaten to throw acid on my face and kidnap my children. One of their daughters insists that her father get rid of us from the neighborhood by any means. This man warns us that he owns the entire street and that if anyone dares to question him, then he will shoot them down.
He keeps a gun at his home and has been regularly threatening us. We have sought help from the police officers, but they have not yet responded to our complaints. It's NDMJ who has been providing us every possible assistance for. Thank you. You can see that how the issues on the ground level, when there are other caste people living in the same bastis and colonies, how they have a lot of pressure from them and then later turns into violence and atrocities. Much has been spoken on manual scavenging. We have an act against it, for the elimination of manual scavenging. There is a Swachh Bharat Abhiyan that is a lot of crores of money has been spent into that, but we don't know what has happened. I would like to call our young activist, Ms. Lalita, who's from an organization called Sasi in Tamil Nadu, who would speak on the issues of manual scavenging. Lalita will speak in Tamil. We do have translation in English and Hindi. Lalita, unmute pannunga, video on pannunga. Lalita? Lalita is not here. There are two Lalitas in the attendees. Lalita, I added her. No, she left. Okay, now she's the panelist. Yeah. Okay. Lalita? Yes, ma'am. Okay. Video on. Okay. Ma'am, good morning, ma'am. Good morning. தமிழகத்துல பட்டியல் வகுப்பினர் வந்து 76 வகையான சாதிகள் உள்ளன. அதுல குறிப்பா வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா பேசுங்க, அந்த இன்டர்பிரேஷன் இருக்கு. ஓகே மேம். தமிழகத்துல பட்டியல் வகுப்பினர் வந்து 76 வகையான சாதிகள் வந்து உள்ளன. அதுல வந்து குறிப்பா வந்து பல்லர், பறையர், அருந்ததியர் சமூக மக்கள் தான் அதிக எண்ணிக்கையில இருக்கிறாங்க. அருந்ததியர் சமூகம் பாத்தீங்கன்னா 80 லட்சம் குடும்பங்கள் வந்து வசித்து வருகிறாங்க. இதுல இந்தியா முழுக்க பார்க்கும்போது இந்தியா முழுதும் வந்து 13 லட்சம் மக்கள் வந்து துப்புரவு பணியில வந்து வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க. குறிப்பா தமிழகத்துல வந்து 60,000 பேர் வந்து இந்த துப்புரவு பணியில வேலை செய்யறாங்க. இந்த சாதி இந்துக்களுடைய பண்ணைகள்ல விவசாயம் சார்ந்த பணிகளையும் செங்கல் சூளையிலையும் வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கல்வியிலும் பொருளாதாரத்திலும் ரொம்பவும் பின்தங்கியவர்களா இருந்து வருகிறாங்க. இவர்கள் குடியிருக்கிற பகுதி பாத்தீங்கன்னா முழுவதுமா குடிசை வாழ் பகுதிகளாகவும் ஒவ்வொரு வீட்லயும் 10க்கும் மேற்பட்டவர்களா இருந்து வருகிறாங்க. இவங்களுடைய தொழில் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மலத்தை அள்ளுவது, சாக்கடையை சுத்தம் செய்வது, தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகளுக்குள்ள அந்த அடித்தட்டுல இருக்க அருந்ததியர், தமிழகத்துல பாத்தீங்கன்னா அருந்ததியர், ஆந்திராவுல ஆதி ஆந்திரா, வால்மீகி உள்ளிட்ட சில பிரிவு மக்கள் மட்டும்தான் இந்த தொழில திணிக்கப்பட்டு அவங்க கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறாங்க. இப்ப நகர்ப்புறங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பாதாள சாக்கடை அடைப்பு ஏற்பட்டுதான் அதற்குள்ள இறங்கி அடைப்பை நீக்கும் பொறுப்பு வந்து தாழ்த்தப்பட்ட ஆண்கள் மீது சுமத்தி இருக்கிறாங்க. சாதி சமூக அமைப்பு மலத்தை கையால் அள்ளி சுத்தம் செய்வதே தாழ்த்தப்பட்ட பெண்கள் மீது இப்ப சுமத்தி இருக்கிறாங்க. அதிலும் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப இன்னைக்கு 90% பெண்கள் வந்து இந்த வேலையில அதிகமா ஈடுபடுத்தப்படுகிறாங்க. இது வந்து இந்தியாவுக்கே ஒரு சாபக்கேடாவும் இல்ல விளிம்பு நிலை சமூகமா இருக்கட்டும். Can you please go slow? ஓகே மேம். ஓகே மேம். இதுல குறிப்பா வந்து 90% பெண்கள் வந்து அதிகமா வேலையில ஈடுபடுத்துறாங்க. இது வந்து இந்தியாவிற்கே ஒரு சாபக்கேடா இல்ல விளிம்பு நிலை சமூகமா இருக்கட்டும், வேற எந்த விதமான சமூகமா இருந்தாலும் இது அசுத்தம் வரும்போது இல்ல கஷ்டமான தொழிலா வந்தாலும் அது அவங்கள பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாரும் அந்த கஷ்டமான சுரண்டலா இருந்தாலும் அது சாதி அந்த இடத்துல இருக்கு. பெண் என்ற அடிப்படையில பெண்கள் மீதான ஒரு சுரண்டல் அதுல நடக்குது. குறிப்பா இது போன்ற துப்புரவு பணிகளில ஆண்கள் மட்டும்தான் குடிபோதைக்கு ஆளாக்குறாங்க, மது அருந்துறாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த தொழில் அதிகமா பெண்கள் ஈடுபடுறதால பெண்களும் குடிபோதைக்கு ஆளாகுறாங்க. இந்த கையால் மலம் அள்ளும் தொழில் வந்து இப்ப வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல வந்து மாறி வருகிறது. ஏற்கனவே வந்து எல்லா வீடுகளும் உலர் கழிப்பிடம் வந்து இருந்தது. இப்ப அதை முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது. ஆனா தீண்டாமையில எப்படி வெவ்வேறு வடிவங்கள் மாறி உள்ளதோ அது போல இந்த கையால் மலம் ஒரு பிரச்சனைகளும் கூட வடிவங்கள் மாறி இருக்கின்றன. துப்புரவு பணியாளர்கள் எப்படி கையால் மலம் அள்ளக்கூடிய வேலைக்கு கட்டாயப்படுத்தப்படுறாங்கன்னா அரசாங்கத்திலயும் சரி தனியார் அமைப்புகளிலும் சரி துப்புரவு பணியாளர்களுக்கான வேலைக்கு அமர்த்தி விட்டு பிரஷ் அவுட் டாய்லெட் என்ற பெயரில மீண்டும் மலம் தள்ளக்கூடிய வேலையில ஈடுபடுத்தப்படுறாங்க.
தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழே பிரதமர் மோடி வந்து பிரச்சாரத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. கோடிக்கணக்கான பணத்தையே இந்த திட்டத்தின் கீழே கோடிக்கணக்கான பணத்தை வந்து இந்த திட்டத்தின் கீழே வந்து செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இந்தியா முழுவதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கழிப்பிடம் இல்லாத எத்தனையோ கிராமங்கள் இருக்கிறது. அதுல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா எஸ்சி சமூக மக்களுக்கே வந்து கழிப்பிடங்கள் இல்லாத மிகப்பெரிய வன்கொடுமை அதுல நிகழ்ந்திருக்கிறது. கழிப்பிடம் இல்லாத இந்த பல கிராமங்களை வைத்துட்டு பிரதமர் மோடி எப்படி வந்து இதை சுத்தப்படுத்த போறாரு என்ற பிரச்சனையை நம்ம ஆழமா பார்க்கணும். இன்னைக்கு நவீன வடிவங்கள்ல கையால் மலம் அள்ளும் தொழில்களில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய தொழிலாளர்கள் மரணத்தையே சந்தித்து கொண்டு வருகிறாங்க. மிஷன் பயன்படுத்தினா கூட டேங்குக்குள்ள போய் மலத்தை முற்றிலுமா அகற்றக்கூடிய மனிதர்களா தான் இருக்கிறாங்க. அப்ப இந்த சட்டத்தை வந்து இது வரைக்கும் நடைமுறைப்படுத்தல. குறிப்பா சமீபத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்திய பிரதேசத்துல 2 சிறுவர்கள் வந்து டாய்லெட் குள்ள போனாங்கன்னு சொன்னதுக்காக அவங்களை அடிச்சே கொண்டிருக்காங்க. இன்னும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உத்தரப்பிரதேசத்துல ஒரு தலித் பெண் வந்து டாய்லெட் குள்ள போனாங்கன்றதுக்காக அந்த பொண்ணை ரேப் பண்ணி மரத்துல கட்டி வச்சு தற்கொலை பண்ண வச்சிருக்காங்க. இப்ப சமீபத்துல கூட லாக்டவுன்ல வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல 18 வயசுல இருந்து 40 வயசுக்குள்ள இருக்கிற 4 தலித் இளைஞர்கள் வந்து பயன்படுத்த முடியாத 18 ஆண்டுகளா மூடி வைக்கப்பட்ட யூஸ் பண்ணாத அந்த செப்டி டேங்க்ல வந்து இறங்கி 4 பேர் இறந்து போனாங்க. இப்ப சமீபத்துல ஒரு 3 நாட்களுக்கு முன்னாடி கூட ராசிபுரத்துல 2 இளைஞர்கள் மழைக்குள்ள சுத்தம் செய்யும் போது கூட இறந்து போனாங்க. இப்ப திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல கூட துப்புரவு பணியில வந்து வேலை செஞ்ச ஒரு பெண்ணுக்கு வலது கை இருந்திருக்கிறாங்க. இது மாதிரி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டேதான் இருக்கு. ஆனா இது குறிச்சு வந்து நிறைய வழக்கு பதிவு செய்யறாங்க. ஆனா இது வரைக்கும் வந்து குற்றவாளிகளை யாரையும் வந்து கைது செய்யப்படல. ஆனா 1993 வந்து சாக்கடையை வரும்போது 20 மாநிலங்கள்ல மொத்தம் 256 மாவட்டங்கள், 20 மாநிலம்னா டெல்லி, உத்தரப்பிரதேசம், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, பீகார், குஜராத், கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்கள்ல வந்து 814 பேர் இறந்து விட்டதாகவும் அவற்றில் 455 தொழிலாளர்களுடைய குடும்பத்தினருக்கு மட்டும்தான் 10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சப்பாய் கர்மசாரி தேசிய ஆணையம் வந்து ஆர்டிஐ கேள்விக்கு அதிகாரப்பூர்வமா ஒரு பதில் அளிச்சிருக்கு. ஆனா இழப்பீடு வழங்குவதில் கூட குறிப்பா குஜராத்தின் நிலைமை மோசமா இருக்கிறது. ஏன்னா இது வரைக்கும் 156 பேர் இறந்திருக்காங்க. அவற்றில் 30%, அதாவது 53 குடும்பங்களுக்கு மட்டுமே 10 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த கையால் மலம் அள்ளும் தடை சட்டம் 2013 கொண்டு வரப்பட்ட இந்த சட்டம் கையால் மலம் அள்ளுவர்கள் மட்டுமல்ல, சாக்கடை வழி பாதாள சாக்கடை சுத்தம் செய்பவர்களும் மலம் அள்ளும் தொழிலாளர்கள் தான் என்று சொல்லுகிறது. ஆனா பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இன்றி மனித கழிவுகளை அள்ள நேரிடுகையில அவங்க சாக்கடையில விஷவாயு தாக்கி மூச்சு திணற அதிக எண்ணிக்கையில தமிழ்நாட்டுல மட்டும் 206 பேர் இறந்திருக்கிறதா ஆணையம் வழங்கிய தரவுகள் கூறுகிறது. ஆனால் அவற்றில் 162 குடும்பங்களுக்கு மட்டும்தான் தமிழகத்துல இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் குடும்பத்திற்கு போதுவான நிவாரண தொகுதி கூட சேருவதில்லை. ஆனா இது எந்த ஒன்றும் இந்த மக்களின் வந்து இந்த இழிவை வந்து தொடக்கப்படவில்லை. தூய்மை இந்தியா திட்டம் என்று முழங்க அரசு. ஒரு மினிட் இருக்கு. ஓகே மேம். தூய்மை இந்தியா திட்டம் என்று முழங்க அரசு அதற்கான கோடிக்கணக்கான ரூபாயை செலவிடும் அதே நேரத்துல துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு உரிய சமூக பாதுகாப்பு, அவர்களுக்கு நவீன உபகரணங்களை அளிக்க தவறிவிட்டது. கையால மலம் அள்ளும் தொழிலை அகற்றி அந்த மக்களுக்கு மறுவாழ்வு ஏற்படுத்தி தருவதற்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை அரசு ஒதுக்கியிருப்பதாக சமூக நீதி மேம்பாட்டுத்துறை உள்ளிட்ட மத்திய அரசு ஆவணங்கள் கூறுகின்றன. ஆனா இந்த சட்டம் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. இதை தீவிரமா நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் இதுவரை கொலை வழக்காக பதிவு செய்யப்படவில்லை. இந்த மலக்குழி மரணங்கள் ஏற்படும் போது ஐபிசில 304A என்ற பிரிவை மட்டும்தான் சேர்க்கின்றார்கள். ஆனா கொலை வழக்கு இது வரைக்கும் எதுவுமே பதிவு செய்வதில்லை. இந்த சட்டம் அமலுக்கு வந்து இதுவரையில இந்தியா மட்டும் 814 பேர் இறந்திருக்கிறாங்க. ஆனா இதுவரையிலும் குற்றவாளிகள் நீதிமன்றத்தில் தண்டனையே வழங்கப்படவில்லை. சாக்கடையில விஷவாயு தாக்கி மூச்சு திணறலாம் இறந்தது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு மட்டும்தான் செய்கிறாங்க. ஆனா வீட்டு உரிமையாளர் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர் மீது SCST ஆக்ட்ல வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும் இது போல சம்பவத்துல நடைபெறுவதால் அந்த அரசு அதிகாரிகள் மீது SCST ஆக்ட் பிரிவு 4 கீழே வழக்கு பதிவு செய்யணும். ரெண்டாவது வந்து உள்ளாட்சி, நகராட்சி, மாநகராட்சி அமைப்புகள் வந்து இந்த செப்டி டேங்க் வாகனங்களை வந்து அந்த அமைப்புகள்ல வந்து பதிவு செய்து 15 விதமான உரிமைகளை வந்து அவங்க பெற்றிருக்கணும். அதை தொடர்ந்து வந்து அவங்க கண்காணிக்கணும். பாதாள சாக்கடை இறங்குவர்களை அதோடு அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை முறையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இத்தொழிலை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்றுதான் நம்மளுடைய நோக்கம். ஆனா உடனடியாக இந்த தொழிலாளர்களை விடுவிக்க முடியலன்னா மாற்று தொழிலையே மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கம் கொண்டு வர வேண்டும்.
மூணாவது வந்து தமிழகத்துல உள்ள தூய்மை பணியாளருக்கு அரசு வந்து நலவாரி அமைத்து அதன் மூலமா அனைவரையும் உறுப்பினர்களா சேர்த்து மானியங்களை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அப்புறம் வாரிசுகளுக்கு வந்து கல்விக்கு ஏற்றபடி மாற்றுத் தொழிலை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும். தேங்க்யூ மேம். Thank you, Lalita. Thank you. Yes, very powerfully she has spoken. So just so that we don't miss her message, I have asked Dr. Ramesh Nathan to quickly summarize, probably in 1 or 2 minutes, what she has said. Thank you, Bina. I think she said shared a lot of experience. I don't know how to summarize in very... in full speed, yes. Lalita, she has spoken about the various modern forms of manual scavenging work which was traditionally forced to do by the various communities like Arundadiyar, Madiga, Valmiki, that type of communities, and still it is the practice. People have been forced and continue to do the manual scavenging. And even though there is no dry letting, but there are other forms of scavenging is taking place. That's cleaning the septic tank, cleaning the sewage, and many places people have died. All over the country, 814 Dalits were died, out of which 50% of the people only got 10 lakh rupees compensation each. But the rest of the people who have died, their families are suffering, they did not get. And she was referring about the Swachh Bharat scheme, which is a favorite scheme for Modi. But she is saying that this is not addressing the, even though they are spending crores and crores of money, but it is not addressing the real core issue of the Dalit at the ground level. Especially most of the Dalits, they do not have a toilets at home, which is really shameful. Because of this, many women are being raped. She has quoted many examples, and she also quoted many examples where the youths and others in Tamil Nadu recently during the COVID time who involved in cleaning the septic tank, they are died in the recent past. So summarizing all this, she has explained it very well, presented the current situation of the manual scavenging issue, and she is making a recommendation that many of the cases are not properly registered and the accused are not arrested, especially the owner who employ Dalits into cleaning the septic tank. So she is saying that the one side is using the abolition of manual scavenging Act 2013 is one, providing compensation and all that. Also, it should be linked with the Scheduled Caste, Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act. Accordingly, the proper section should be invoked, the accused should be arrested, and especially the officials who are not or who are failed to do their duties, willfully they neglect their duties, not to take action against those perpetrators. Those officials should be punished under Section 4 of the SC/ST PU Act. And finally, she's saying that our ultimate aim is to end the manual scavenging. But in the process of ending the manual scavenging, we need to also see the rehabilitation measures for the people who are suffering or being forced to do this manual scavenging, and alternate employment should be provided so that they will be come out from these clutches of the manual scavenging. The children should be given good education, and their children should be given employment opportunities, so that over the period of time, the community will really empowered, and they will get rid of this kind of slavery manual scavenging issues. Thank you, Bina. Thank you, Ramesh. I think very well summarized. I'll go on to the next speaker, Kuldeep Bodh, who is from the Bundelkhand Dalit Adhikar Manch, who will be speaking on education justice, higher education, his focus will be. Kuldeep, आप अनम्यूट कीजिए और वीडियो भी ऑन कीजिए. कुलदीप जी अनम्यूट कीजिए. Yes, ma'am. हाँ. If you can give him video. Okay, great. Please go ahead. 5 minutes है. Yes, ma'am.
ओके, जय भीम टू ऑल ऑफ यू। पहले तो इस जनता पार्लियामेंट में मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे स्टूडेंट्स की आवाज़ रखने का एक मौका दिया। मेरा नाम कुलदीप कुमार बौद्ध है और मैं यूपी के बुंदेलखंड एरिया में काम करता हूं NCDHR DA3 के साथ, और हमारा एक कैंपेन है यहाँ पे बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, जो कि युवाओं के साथ मिलकर के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में काम करता है। बेसिकली हम यहाँ पे हायर एजुकेशन के पर्पस में बात रखना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस देश में बने हुए हैं पिछले 3-4 साल से, अगर आप देख रहे हैं, आप रोहित वेमुला का जब केस हुआ पूरे देश में, तब एक बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ रोहित को लेकर के। बुंदेलखंड क्षेत्र जहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये दलित बाहुल एरिया है, लेकिन एट्रोसिटी प्रोन एरिया है। अभी सुबह के जो सेशन में हमारे एक्सेस टू जस्टिस पे डिस्कशन चल रहे थे, हमारे यहाँ पिछले 2 साल पहले जैसे रोहित वेमुला के यहाँ का केस हुआ था, वैसे ही सेम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि वो फ्री में एडमिशन लिया था, यानी कि SC कैटेगरी से बिलोंग करता था, और उसको बार बार प्रताड़ित किया जाता कि तू दलित है, फीस नहीं देता है और ऐसे ही पढ़ के जाएगा। तो उसने अपने हॉस्टल रूम में जाके सुसाइड किया था। तो इस तरीके के हालात हैं कि स्टूडेंट के साथ जिस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर हम बुंदेलखंड में पिछले 4 साल से जो हायर एजुकेशन को लेकर के काम कर रहे हैं, मैं उसके कुछ अनुभव आपके साथ रखना चाहेंगे कि पूरे बुंदेलखंड के हम 5 और यूपी के 5 यूनिवर्सिटी में हम लोग काम कर रहे थे, तो हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसलिए पढ़ाई छोड़ करके दूसरे कामों में लग गए क्योंकि इनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिली। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमारे दलित आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए आगे की पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा सहायक होते हैं, और वही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हमारे स्टूडेंट को सही समय से नहीं मिलती है। पूरे उत्तर प्रदेश का जब हम बजट एनालिसिस देखते हैं, तो हायर एजुकेशन में जो हमारे स्टूडेंट्स को बजट जाना चाहिए, हमारे स्कॉलरशिप का जो बजट होना चाहिए, वो भी उनको समय से नहीं पहुंच पाता है। अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें इस सत्र 2019-20 की, तो 2019-20 को लेकर के हम अलग अलग स्टेप पे स्टूडेंट के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक चीज हमारे सामने जो स्टडी में हमारे पास आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो वो छोड़ करके पलायन करके चले जाते हैं। बुंदेलखंड एरिया जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी पलायन करते हैं, जो पूरे फैमिली के साथ जाते हैं खाने कमाने के लिए, और इसमें बड़ी तादाद जो है वो है SC ST OBC स्टूडेंट्स की है, जो माइग्रेशन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं, जिनका एजुकेशन स्टेटस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो उनके साथ प्राइमरी एजुकेशन से आप देखेंगे तो शुरुआत से ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं खुद उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। जब मैं प्राइमरी में था तो मेरा कुलदीप कुमार नाम किया गया, कुलदीप सिंह काट के, क्योंकि सिंह सिर्फ दलित लिख सकते हैं, एक दलित लड़का सिंह नहीं लिख सकता है। तो इस तरीके का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वो बुंदेलखंड पूरे यूपी में होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको देखा जा सकता है कि किस तरीके से हायर एजुकेशन में दलित स्टूडेंट के साथ भेदभाव होता है। उसके मद्देनजर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन में पहुंचते भी हैं, JNU और उस तरह दिल्ली के अलग अलग यूनिवर्सिटी के सपने देखना तो उनके बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी वो जिस लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहां पर भी स्कॉलरशिप समय से ना मिलना, स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन होना, और उनके साथ जो इस तरीके की प्रताड़ना होती है, उसकी वजह से वो अपनी हायर एजुकेशन से विथड्रॉ कर लेते हैं। मैं इस साल की आपको एक आंकड़ा रखना चाहूंगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हमने 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर के जब RTI फाइल किया, मेरे पास RTI के बहुत सारे कॉपीज हैं। मैं एक कॉपी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो एक डिस्ट्रिक्ट है बनारस, जहां से मोदी जी सांसद है, और उस डिस्ट्रिक्ट का भी मैंने कंपाइल किया है, जहां पे पिछले साल 2019-20 में अनुसूचित जाति SC के 17,395 स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट किया, जिसमें से 946 स्टूडेंट को रिजेक्ट ही कर दिया गया। वहीं पे सिर्फ और सिर्फ 16,000 स्टूडेंट्स को भेजा गया, जिसमें से मात्र अभी जिनके खातों में स्थानांतरित किया जाना है स्कॉलरशिप की धनराशि, वो संख्या इतनी बड़ी है कि अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि स्टूडेंट पढ़ेंगे कैसे। हम लोगों ने स्टूडेंट्स का जो स्कॉलरशिप उन्होंने इस साल जारी किया, मात्र 500 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, 1500 रुपए, जबकि 6,000 स्कॉलरशिप में आप 1500 1000 रुपए देके उनको बांटा रहे, उससे कैसे होगा। बनारस में SC स्टूडेंट्स का एक आंकड़ा जिन्होंने इस साल एप्लीकेशन फाइल किया था, 26,260 थे, जिसमें से 7,454 स्टूडेंट को डाटा सस्पेंशन में डाल दिया है। और अभी स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप देनी बाकी है, एक सिर्फ बनारस डिस्ट्रिक्ट, जिसको मोदी का डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, MP बने हैं, लेकिन उसी डिस्ट्रिक्ट में 21,459 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप अभी नहीं मिली है।
अब आप सोचिए एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 21,000 स्टूडेंट स्कॉलरशिप से वंचित होंगे तो वो कैसे अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई करेंगे। तो एक बड़ा सवाल है जिसपे हमें सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। और इस जनता पार्लियामेंट में जिस तरीके से अलग अलग इशू पे सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन और स्टूडेंट का सवाल भी लेकर के हमें आगे बड़े लेवल पे एडवोकेसी करने की जरूरत है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें खास तौर से लड़कियां हैं और यंग लड़के हैं, जो अपना कैरियर दांव पे लगा के, कोविड के समय पे बहुत सारी सिचुएशन खराब हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, कोविड ने उनके हालात खराब किए हैं। अब वो कैसे आगे पढ़ाई करेंगे, ये भी एक सवाल है। हम सब लोग को मिलकर इस पर पे एक बड़े लेवल पे एडवोकेसी करनी चाहिए। हम लोग भी जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास पूरे देश में होना चाहिए। यही मुझे आप सबके साथ साझा करना था। थैंक यू। जय भीम। Thank you, Kuldeep. Very nicely put. Post-metric scholarship is one of the biggest schemes we have in this country. And also education is something that Dalit, Adivasi, OBC youth look up to. So that is something that we would really like to see effectively implemented. Thank you, Kuldeep ji. Shukriya. I'd like to now call upon Chandrakanta Bharti, who would be focusing on school education. And she's from the Center for Social Equity and Inclusion. Chandrakanta? Please unmute your mic and also put on your video, please. Are you able to hear me? Yes, yes. Please go. Thank you so much, and congratulations to everybody. So many information came in front of me, and I'm going to speak on education, but there's so much relevant issue already spoken about. Chandrakanta, your voice is not clear. Maybe yes, please put headphones. Yeah, so yeah, I was just saying that there was some important issues already spoken, which is very much related to the education. If the life is not there, my life is already happening, and you are a patan sada for me because of so many destination. You can't continue with your education. We cannot hear you. We cannot. Chandrakanta, your voice is coming muffled, so we can hear you. We can only hear some sound. We can't hear words. It is coming. Hello. Yeah. Now. Hello? Now. Yes, please go ahead. Okay, yeah, because of this some technical issue. Yeah, so I just want to be put it here the issue of school education. As we know, school education is very important for our children who are belonging to the especially Dalit and ST community. So I just want to be put some data here. As we know, like I would like to speak more in Hindi because many people are more comfortable with the Hindi. So yeah. Yes, please go ahead. We have translation. Yeah, sure. So 2020 के एक जनसंख्या का जो भारत की जनसंख्या है उसमें हम देखते हैं कि 1.38 बिलियंस है ये जनसंख्या, और जिसमें से जो शायद आने वाले टाइमिंग में 23-24 तक प्रोबेबली 1.42 बिलियन से आगे जाने वाली है। और हम देखते हैं इसमें हमारे देश में मौजूद जो स्कूल है वो 1.5 मिलियन से ज्यादा है, और इसमें से भी जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो है 260 मिलियन से भी ज्यादा। तो हम ये देखते हैं इसमें हमारा आने वाले टाइम में हमारा जो देश है वो बहुत ज्यादा युवा देश होने वाला है, जो एजुकेशन से बहुत ज्यादा सरोकार रखेगा और उसका सीधा इम्पैक्ट इन युवाओं पर होने भी वाला है। तो इसलिए हमें इसके बारे में अगर आज हम नहीं सोचते हैं और हम इस पर सुधार नहीं करते हैं तो इसके खामियाजे पूरे देश को ही नहीं, स्पेशली जो डिप्राइव कम्युनिटीज हैं उनको तो जरूर झेलना पड़ेगा, जिसमें SC ST और बाकी कम्युनिटीज भी आते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 से 11 के बीच में ST और ST के बच्चों की जो स्कूल एजुकेशन में एनरोलमेंट है वो बढ़ा है, नो डाउट। प्रतिशत के हिसाब से ड्यू टू द RT एक्ट ये प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन रियलिटी में बहुत सारी जैसे कि हम देखें जो बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं टोटल इंडिया में वो 4% है सिर्फ। अनुसूचित जाति के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ अभी। जो 6 साल के बच्चे होते हैं जो स्कूल जाना शुरू करते हैं वो सिर्फ 45% हैं जो स्कूल जाना 6 साल में शुरू करते हैं, जबकि हम मानते हैं कि एजुकेशन 6 साल से शुरू हो जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द RT एक्ट भी 6 साल से 14 के बीच में वो सपोर्ट करता है। लेकिन हमारे बच्चे जो SC कम्युनिटी से बच्चे हैं और ST कम्युनिटी के बच्चे भी हैं वो पढ़ाई देर से शुरू करते हैं, इस परसेंटेज के हिसाब से वो 6 साल के बाद ही शुरू करते हैं।
तो और इसमें से भी हम देखते हैं कि ज्यादातर जो ड्रॉप आउट होता है वो ड्रॉप आउट जब बच्चे या जब बच्चे मिडिल क्लास में पहुंचते हैं, जैसे 10वीं और 11वीं की कक्षा में जब पहुंचते हैं, तो ज्यादातर ड्रॉप आउट उनका होता है। ये 15 साल की उम्र के लगभग होता है। जो आरटी एक्ट के बाद जो उम्र शुरू होती है वहां पर इनका ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है। उसका रीजन शायद यही है कि ड्रॉप आरटी की वजह से बहुत सारे बच्चों को एडमिशन करना ही जरूरी है, रखना भी जरूरी है, डिटेंशन नहीं हो सकता, तो वो बच्चे स्कूल के अंदर होते हैं। शायद नामांकन भी दिखने का इतना बड़ा जो नंबर है वो इसीलिए है। लेकिन जब वो बच्चे अपनी पढ़ाई में आते हैं, उनको खुद से पढ़ना होता है, सपोर्ट नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं होते, तो वो ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक मैं एनएसए के एक सर्वे की बात करूंगी जो 2014 का है, जिसमें हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट स्कूलों ड्रॉप आउट बच्चों की जो संख्या है वो 6 से 8 की एज की जो है, उसमें से जो बच्चे ज्यादातर ड्रॉप आउट होते हैं, ये सर्वे में इस एज को लिया गया है, जिसमें से ड्रॉप आउट बच्चे पूरे स्कूल में 4.5 करोड़ से अधिक थे, जो सारे टोटल बच्चों का 16.1% है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा है 20%, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 21%, गुजरात में है, बिहार में है, एमपी में है, राजस्थान में है और पश्चिम बंगाल में है, जहां पर 6 से 16 के जो 6 से 18 के जो बच्चे थे वो सबसे ज्यादा नंबर में ड्रॉप आउट दिखते हैं। तो उसके बाद अगर सेकेंड लेवल पे देखें तो केरल, गोवा, सिक्किम, हिमाचल और तमिलनाडु में बच्चों का जो अनुपात है वो थोड़ा औसत से थोड़ा कम था। उससे भी ज्यादा हम देखते हैं कि 10 साल हो गए हमारे आरटी एक्ट को और 16 साल इस एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक फंडामेंटल राइट को की तरह एक्सेप्ट करते हुए फिर भी हमारे बच्चों के ड्रॉप आउट का ये पोजीशन है कि अभी भी हम 16.1% में ड्रॉप आउट बच्चों को देख रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि शहरी बच्चे थोड़े कम ड्रॉप आउट होते हैं, स्कूल गांव में जो है वहां पर से बच्चे ज्यादा ड्रॉप आउट होते हैं। इन ड्रॉप आउट में भी अगर हम देखें तो लड़कियों का अनुपात ज्यादा होता है, लड़कों का अनुपात लड़कियों के बनिस्बत कम होता है। लड़कों का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हम जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी स्टेट किया है, कि 15 साल के बाद से बच्चे ड्रॉप आउट होना शुरू होते हैं। लड़कों पर बहुत बड़ा दबाव होता है, उनको स्कॉलरशिप आज की डेट में हम देखते हैं बहुत सारे राज्यों ने बंद कर दी है, जहाँ चल भी रही है वहां पर उन्हें टाइमली नहीं मिलती है, तो उनको अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए काम के लिए जाना पड़ता है। और लड़कियों को बहुत सारी सिक्योरिटी सेफ्टी के रीजन है, जो मैंने एक स्टडी हम कर भी रहे हैं इस वक्त और उसके पहले की जो स्टडी हमने करी है स्पेशली यूपी के केसेस में, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। रीता ने ऑलरेडी बोला है कि किस तरीके से एडोलसेंस लड़कियां जो हैं उनकी जो सेफ्टी है वो एक बहुत बड़े क्वेश्चन में है, तो इसलिए उनके लिए कंटिन्यू कर पाना बहुत सारे, इवन दिल्ली में मैं कहूंगी, दिल्ली में भी लड़कियों को सेफ्टी सिक्योरिटी का इतना इशू है, जबकि मेट्रो है वो लड़कियां स्कूल को होना पड़ता है जब वो एक एडोलसेंट एज में जाती हैं। दूसरे यहाँ पर देखते हैं कि 1 more minute. या ओके या सो इसमें एक चीज मैं और भी स्टेट करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास हमारे देश में इतने ज्यादा नंबर में ड्रॉप आउट है, जब हम ड्रॉप आउट बच्चों को देखते हैं और वो हम अगर जो चाइल्ड लेबर का एक्ट भी देखेंगे तो हम ये मानते हैं कि वो जो एज है, जो चाइल्ड लेबर की एज होती है, तो ये जो बच्चे पूर्ण चाइल्ड लेबर में है, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारे देश में, भारत में सबसे ज्यादा बाल मजदूर हैं। तो हमको इस बात में बहुत सोचना पड़ेगा, और ये भी हमें अच्छी तरह पता है कि ये कौन है, ये किस कम्युनिटी से बच्चे आते हैं जो इतने नंबर में ड्रॉप आउट है। डेफिनेटली जो प्रिविलेज कम्युनिटीज हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन को कहीं ना कहीं कैसे भी कंटिन्यू कर पाती हैं। एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी, आरटी एक्ट का ही एक सेक्शन 12 है जो प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का प्रोविजन देता है, जिसमें हम देखते हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स इसके बारे में है। हर साल 20 लाख सीट्स आती हैं पूरे देश में, हर साल 20 लाख सीट्स आते हैं और सिर्फ 5 से 6 लाख इसमें फिल होते हैं। तो आप सोचिए, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी और जो पुअर बच्चे हैं उनके लिए है, और ये पूरा नहीं हो रहा है। बहुत सारी और भी बातें हैं कहने के लिए कि जो रिप्रेजेंटेशन है, जो स्पोर्ट फैसिलिटीज है, स्कॉलरशिप फैसिलिटीज है, एंटाइटलमेंट में कुछ मायने में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है आरटी एक्ट की वजह से, लेकिन फिर भी अगर हम शिक्षा को हायर एजुकेशन की तरफ बच्चों के लिए जाता देखें तो बहुत बड़ी समस्या है कि 9th और 11th में बच्चों की फेलिंग की वजह से बच्चे आगे के लिए एजुकेशन में कंटिन्यू नहीं कर पाते, और इसलिए हायर एजुकेशन में उनका जाना एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, जिस वजह से वो इस एजुकेशन में आगे इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनकी स्थितियां हैं ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे लिए कि कैसे
एक बात मैं यहाँ पर एक रिपोर्ट के मार्फत कहना चाहूंगी कि कोविड के दौरान में 62% जो सर्वे हुआ है घरों का, उनमें से 62% बच्चों ने स्कूल परिवार के बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है कोविड के दौरान। उनकी एजुकेशन बंद हो गई है। हम जानते हैं कि हर जगह से मेट्रो से परिवारों ने माइग्रेट किया है अपने होम टाउन के लिए, और वहां जाने के बाद उनका ना जॉब है, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और ना ही किसी तरीके की सुविधा है। स्कूल के अंदर स्कूल भी नहीं चल रहे हैं, तो जिस वजह से बच्चे बहुत ही ड्रॉप आउट हो रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज्ड हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो हमें देखने चाहिए, और इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच टू प्रोवाइडिंग दिस स्पेस एंड दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर दिस important thing, and hope we will do something collectively advocates for that. Thank you so much. Thank you, Chandrakanta. I think very well brought out the issues of school education and how children are dropping out of schools. Mostly the children dropping out are Dalit Adivasi children. Thank you so much. I would now request Dr. Ramesh Nathan, who is the General Secretary of the National Dalit Movement for Justice, to go on to presenting the resolutions. Can we have the resolutions as well on the screen? Please go ahead, sir. You're on mute and video also. Thank you very much, Veena. Dear panelist and member of Janta Parliament, I would like to present few facts and propose 6 resolutions on behalf of this panel. The fact is that according to National Crime Record Bureau 2018, about 42,793 cases are registered, the crime committed against Dalits, and 6,568 crimes are committed against the Adivasi communities. This is registered under the Scheduled Caste, Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act. In the budget financial year 2020 and 21, there is a gap in the allocation of 55,915 crores for scheduled caste and 23,381 crores for STs. This is the gap in the budget allocations. Around 50% of Adivasis and 33% of Dalits are still living under below the poverty line. So based on these facts, like to propose 6 resolutions. The number 1 is to legislate a central act for the special component plan and tribal sub-plan to ensure proper budgetary allocations for socio-economic development of the Dalit and Adivasi communities. Number 2, ensure proper implementation of SC/ST PO Act 1989, so that the mechanism like establishment of exclusive special courts and appointments of exclusive special public prosecutors shall take place in order to ensure speedy trial and speedy justice. Number 3, social security schemes to be introduced for Dalits and Adivasis to ensure that they are able to access healthcare during a pandemic like COVID-19. Number 4, provide reservation to Dalit and Adivasis in the private sector employment. Number 5, ensure proper implementation of 5th schedule of the Indian Constitution and laws like Forest Rights Act 2005 and Panchayat extension to Scheduled Area 1996. The last, that's 6th one, forest-based livelihood schemes and policies shall be implemented during the COVID-19 pandemic to stop Adivasis from migrating to other states for the livelihood. So these are the 6 resolutions are proposed on behalf of this panel. So I'd like to request the member of parliament to pass these resolutions. So before that, we have polling. Before the MP speaks, we have a polling at the
at the bottom of your screen, or you can see the polls. It'll come up, right? All the questions. We'll do the polling. Dina, can you read out the Hindi version of the resolution for the? Okay. On your screen. ठीक है, I'll read quickly in Hindi. स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान को लेकर एक कानून अमल में आया जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 और नियम the numbers I can't, और भी बेहतर और मजबूती से कार्यान्वयन हो, जिसके तहत और विशेष न्यायालयों का एवं विशेष सरकारी वकीलों का चयन हो। इससे दलित और आदिवासियों के खिलाफ हो रही हिंसाओं में न्याय प्रक्रिया को तेजी प्राप्त होगी। दलित एवं आदिवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीति को अमल में लाया जाए, जिससे कि वो कोविड-19 महामारी के दौर में स्वास्थ्य सुविधाएं का इस्तेमाल कर सके। दलित और ओके, आई कांट सी नाउ। दलित और आदिवासियों को निजी क्षेत्रों में नौकरी एवं शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया जाए। आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन दिलाने के लिए संविधान की अनुसूची 5 ऐसे कानून और वन अधिकार अधिनियम का मजबूती के साथ अमलीकरण हो। कोविड-19 के दौरान वन आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बेहतर और मजबूत नीति अमल में लाई जाए। ओके, so we can have the polls now. Okay. So आप लोग you can vote for the if you're voting from the system, please scroll down to see next questions, and if you're voting from the phone, please click on next to see the next question. अगर आप सिस्टम से वोट कर रहे हैं तो स्क्रॉल करके नीचे आइए बाकी के सवालों को देखने के लिए। अगर फोन से वोट कर रहे हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए बाकी सवालों को देखने के लिए। The panelists cannot vote, so we are exempted from voting. Sorry. Please stop meddling with the polling. Please do not do anything. We have to relaunch it. Somebody stop the voting. What shall I do? Shall I end the poll, Bina? No. No, sir. You wait. Okay. Co-hosts and panelists cannot vote. You have 30 more seconds to vote. आपके पास 30 सेकंड और हैं वोट करने के लिए। Bina, you can share the results now. Say stop and share results, yeah? Okay, 1 second. Okay, so you can just tell the results, how many percentage we have got here. Okay. For the
First resolution, it is 57 people voted, it's 100% it shows. And the second resolution, again 57, it shows 100%. Then the third resolution, 57, 100%. Fourth resolution, yes, 52 members, 91%. No, 5 people, it's 9%. And the fifth one, 57 members, 100%. And the last one, 57 members, 100%. Which means all 6 resolutions are passed. Thank you for voting. Thank you. Only reservation in private sector, there is few members are said no. No, yes. But even there is majority 52, so 91% it get passed by this Janta Parliament. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ramesh Nathan, for leading the polls. I would now quickly request the MP, Honorable D. Raja, sir, to please say a few words and respond to this Janta Parliament. Good afternoon to. Yes, sir, we can hear you. Yes, sir, we can hear you. Do you hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay. Good afternoon to everybody. At the outset, I must make it clear, I'm not in Parliament now. I retired last year after completing 2 terms in Rajya Sabha. But my party people are there in both the houses of Indian Parliament. I support the resolution adopted. I support the demands which have been raised in the resolution. In fact, my party, the Communist Party of India, has been consistently fighting for these demands inside Parliament and outside Parliament. But how to accomplish our goal, how to achieve these demands? Because we are living in a new situation in India. It's a very challenging situation for everyone. On the Independence Day, Prime Minister Modi was roaring from the ramparts of Red Fort as though RSS fought and won the independence for the country. At the same time, what was happening in Tamil Nadu? One Dalit woman, a village panchayat president, was not allowed to hoist the national flag. She was prevented. After some days, yesterday, she was allowed to hoist the flag. The person who prevented her, a junior level bureaucrat in panchayat, he has been placed under suspension, but no case against this Atrocities Prevention Act. This is not an isolated case only in the state of Tamil Nadu. We come across such cases everywhere. This is one nature of the discrimination. But there are other atrocities, horrific crimes. The way the Dalit little girls were subjected to crimes and killed in the state of Uttar Pradesh, where BJP is in power. We should keep all these things in our mind. And all these demands, nobody can have objection. But how to get these demands accepted by the government? The present government is RSS-led government. Let us be very clear. BJP is nothing but a political arm of RSS whose ideology is divisive, sectarian, communal, fascist. This is what we should keep in mind.
because all these demands, I spoke with great amount of agony and anguish in Parliament, and we are talking about component plans, such as schedule cost component plan, tribal sub plan. Where is the planning commission? Ever since BJP came to power, the first thing which they did is dismantling of planning commission. Now there is no sub plan, tribal sub plan, there is no component plan. You be clear on what they call central welfare schemes, and the money is allocated for those schemes, and this is atrocious thing the BJP government has started doing, and we have raised that question, but no answer. And you are asking about reservation in private sector. I myself moved a private member resolution in Rajya Sabha demanding reservation in private sector. Now what is happening? In the name of Atmanirbhar, all economic activities are handed over to private parties. All the spheres of Indian economy. Indian economy is already sick and sinking. Even then, all the spheres are being handed over to corporate capitalists and foreign direct investors. Which sphere is omitted? You please think over. Please think over. Both strategic, non-strategic, public sector undertakings are put on sale for privatization. 100% FDI in coal sector, 74% FDI in defense sector, atomic power sector, space sector, they are all opened up for private participation. Railways are being privatized. Now airports are being privatized, being handed over to private parties, and all economic activities, government is abdicating and handing over to corporate houses, big business houses. When public sectors were built, it was Dr. Ambedkar who fought for reservation, and in order to empower the Dalits, Adivasis, and other backward classes, in order to provide them access to government jobs and education, this policy was evolved. And where is that policy? RSS openly is opposing that policy. You all should remember, Mr. Mohan Bhagwat demanded debate on reservation. Even the Supreme Court has given adverse judgments on reservation. People are to fight on the streets against the adverse judgments, because there is a Supreme Court judgment, reservation should not go beyond 50%. But the BJP government brought a legislation giving 10% to economically weaker sections. How that is possible? Supreme Court is discussing contempt, law of contempt cases, and here who should be held for the contempt of the law? So there are many issues we should try to understand. These demands can be used for mobilizing the people. These demands can be used for building campaign, building movement. But in order to get this demand, we will have to fight for a change, fight for an alternative. And here I would like to bring to your notice, in Indian society, caste, class, and women are the most primary issues and questions. Caste, one should not underestimate. Caste is a monster. That is what Dr. Ambedkar said. You go anywhere, that monster crosses you. And in 74th Independence Day, when we celebrate caste, that has become a major issue. And how to fight this caste? As long as castes are there, even our India cannot be
called as a nation in social and psychological sense. That is what Dr. Ambedkar has said. As long as castes are there, the discrimination will continue. The atrocities are going to continue. How to annihilate the caste, how to fight the caste. This must be our objective. Then class. When I say class, it is exploited and exploiting classes on haves and have-nots. This is the problem of India. Growing social inequality, growing economic inequality has become acute in our society. This is the class issue and gender, the women issue, gender issue. And are we treating our women as equal citizens? Are we giving them equal access to the policy making of our government or non-government organizations? What is the role of our women in our society? So all these questions need to be addressed. But if you question the government, if you criticize the policies of the government, you will be dubbed as anti-national. Again, I go back to Dr. Ambedkar. Ambedkar made it clear, nationalism is one which is opposed to external oppression. Nationalism is one which is opposed to internal oppression. Our people fought, made supreme sacrifices. We ended the external oppression. We won the independence, but the internal oppression continues. The internal oppression in the name of caste, in the name of social inequality, it continues. That is where the Constitution makes it very clear. We should fight for justice, social, political, and economic. Social, political, and economic. And unless we fight for this justice, we cannot accomplish anything. And that is where I am very clear, because what is being built today by the present government, it is nothing but a new administrative, constitutional structure. It is being built. Indian Constitution given to us by Dr. Ambedkar and galaxy of leaders, that is being subverted. Everybody knows democracy is subverted. That is known. Even Parliament, what is going to happen to Parliament? That has become a big question mark. Whether Parliament will remain vibrant as a sovereign body representing the sovereign will of the people, or it will become redundant and defunct. Nobody knows. That is where the present situation has become a challenging one. They talk about Hindu Rashtra. Again, I go back to Dr. Ambedkar. So 1 more minute, sir. Yes. I go back to Dr. Ambedkar. That is Ambedkar who said, if at all Hindu Rashtra becomes a fact, it will be calamity for the nation. Now the nation is facing that calamity, and how to save our constitution, how to save our independence, how to save the republic from this calamity. Unless we save our republic, we cannot accomplish these demands. And these demands must be used for mobilizing the people, building campaign, moving forward to a bright future. India needs to be changed. India needs to be saved. Save India, change India must be our slogan. And while supporting these demands, while supporting this resolution, I suggest the fight is on, and all secular democratic forces, left forces must come together and unite the people in this struggle for the future of our country. And I will advise my people in both the houses of parliament to raise these issues strongly whenever the parliament
meets, I will suggest, even I can speak for the entire left parties will take up these issues. I hope the other parties will also uh, agree to our position, and because it is not an issue of one party, or it is not an issue of one section of the society. It is an issue for the entire country and its future. Let us fight together. Let us move together. And I support this resolution. I support these demands, which I've been doing all along. Thank you very much. Thank you, sir. So eloquently put. For us, you'll always remain an MP because you represent 160 million people of this country, Dalits and Adivasis. So thank you very much. I would also like to thank all the panelists. I think excellent session, both the Adivasi as well as the Dalit session. A lot of issues were covered, and we hope that the people, MPs, and the government is listening to these recommendations and resolutions. I would like to stop this by a quote from Babasaheb Ambedkar, who said, "How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy, which this assembly has so laboriously put up." And I think we've come to that time where we have to stand up and stop democracy from being destroyed. I think we have to collectively do that. Jai Bhim, Johar, Salam. Thank you very much. I hand over the panel now to Murli ji for the session on disability. I would request all of you to continue to stay on for this session. Thank you. Can my video be on, please? You're on, actually. You're on. I yeah. can't see myself. We can see you. That's very good, very good. Thank you, Bina, for conducting a very, and Paul for conducting a very enlightening session on Adivasis and issues of Dalit, but consumed a lot of time also in this entire discussion. And we are actually, if you go by time, we are just left 12 minutes to conclude the entire session. But I don't think that would be possible. It would be doing injustice to both the disabled and the elderly, whose sessions I'm supposed to chair now. As far as will be very short, the disabled session will be very short because we have confined it to 40 minutes. We are actually planned the session in such a manner that considering the internet and connectivity problems, we have decided that all our panelists will be sending their videos in advance, and we have it has been done. So excepting for me, who will be placing a resolution, all others have sent in their videos. So it will be very crisp and very very time-bound manner will be finishing. I have as panelist Tony Kurian, who is a student from IIT, Jhansi Rani from Tamil Nadu, Shruti Lata from Gujarat, Nipun Malhotra from Gurgaon, Seema Lal from Kerala, Kiran Naik from Karnataka, Seema Bakar from Delhi, Deepak Nathan from Tamil Nadu, and Poonam Natarajan, who is a former chairperson of National Trust. I'm not going too many details of the introduction because we are very short. We are running short on time. First of all, congratulations and to the organizers of this this session, this Janta Parliament. On behalf of the entire panel of speakers representing disability, I would like to thank the organizers for calling this session and allowing time to discuss on the impact of COVID on the disabled population. I am here at the outset moving a resolution listing some of the issues that rose during the COVID period before the disabled community and placing some of the demands. I'm not reading out the entire resolution. The resolution will come again. In 2016, as all of you know, the Parliament passed the Rights of Persons with Disabilities Act. Its schedule recognizes 21 conditions as disabling. But we have to remember the disabled are not a homogeneous group. Their issues are diverse, and so are the solutions. Even among disabled, the issue of gender, caste, and various other intersectionalities exist. I'm glad
Then some of the sessions, the issue of disability was also raised in many sessions. I've seen this in earlier sessions that we had the last few days. Let me now come to the issue proper. The abrupt lockdown led to thousands of disabled people throughout the country losing their livelihood. A 30-year-old blind boy who hawks in Mumbai, local trades, is out of work since the end of March. He called me the other day, narrating his plight and saying that he has no means of livelihood, he's unable to run his family, etc., etc. But he's not alone. There are thousands like him who do small errands to earn their living, who have been actually thrown out of employment, lost their livelihood during this period due to the abrupt lockdown that has been talked. Though the unlocking process has started now, there is no sign of getting jobs back. Even otherwise, as per the 2011 census, around 65% of the disabled population is unemployed. The Niti Aayog also has around the same figure. And among as far as disabled people engaged in organized sector are concerned, it is a mere 1%. Now, because of privatization, outsourcing, etc., the existing avenues of employment for disabled people have also shrunk in the government sector. Even now, the railways have been privatized. The largest public sector undertaking, which employs a large number of disabled people, now that is going to be privatized. The spree of privatization that is taking place in the country actually nullifies the 4% reservation that is guaranteed by this act. The 4% reservation guaranteed by the act actually makes no sense when people with disabilities cannot be employed. Most of the people who are employed, disabled people, are employed in the informal sector, like in hawking on trains, bus stops, and doing odd jobs. Now, and many are also, as all of you might have seen, many of them are also into begging, unfortunately into begging. Now with mandirs and masjids and all temples and girjagars closed, this section that was actually relying on begging is also facing untold hardships. But as against the situation, what has been the response of the central government? While huge concessions have been rolled out to the corporations, the Divyangs, a term that is used by the government, has been left at the mercy of Ram actually. The finance minister announced an ex gratia of rupees 1,000. But what she hid from all of us is that this amount would be transferred to only those covered under the Indira Gandhi National Disability Pension. Others are not being covered. Let us be very clear about this. And this is only given to those, and this National Disability Pension goes only to those who are 80% or more of a disability and are under the BPL category. No special schemes or loan announcements have been made for the disabled in this Atmanirbhar sort of thing that they have come about now. As Atmanirbhar is a newly coined and newly discovered term actually for all of us. However, we also need to understand, even if we talk about people who are covered under the scheme, it is only 3.81% of the disabled population who are covered under the scheme. And again, I say, this is the population that has been identified by the 2011 census. What is the total number of beneficiaries who have got this 1,000, who are supposed to get this 1,000? It is just 10,20,065. Not 1% more than this 10 lakh that is covered. So it's a cruel joke that the government has played on us. I'm stressing on the point of identified population because the 2011 census was based on 7 disabling conditions that were recognized at that time. Now, as per the 2016 Act, Rights of Person with Disabilities Act, 21 disabling conditions are recognized. So we have a huge disabled population that has to be identified, counted in the census, and collected. Somebody is interrupting me. Anyhow, it is a cruel joke that the WHO actually says, the 2000 WHO report on disability says that 50% of the world's population lives with some form of disability, of whom 2 to 4% experience significant difficulties in functioning. So you have a huge population that is unidentified and denied of coverage under various schemes and entitlements. But census 2011 actually puts the disabled population at a mere 2.1%. This is actually gross discrimination, underestimation, sorry.
Certification is a major issue as far as disabled people are concerned. Even the annual reports that the Government of India, the Ministry of Social Justice and Empowerment publishes, says that certification is actually 51% of the identified population. So there is even those who have been identified have also not been certified. So that's a huge thing that we need to understand. Also, when governments make announcements, make various schemes, etc., there is an additional, what is tends to be forgotten is that disability entails additional costs like wheelchairs, crutches, hearing aids, assisted devices, etc. These are actually not factored into when schemes are announced. Most then in the COVID time also, what we had found out is that issue of health, actually access to healthcare during this period. Most disabled people have some health issue or the other. These they were denied because of COVID. All hospitals were turned into COVID care centers, most of the government hospitals. So regular care was denied. People with thalassemia and various blood disorders who need regular transfusion of blood, they could not get blood supplies actually at that time. Even the Red Cross India had come up with a report that there was a shortfall of 50% during this period. So, and treatment for various other diseases also, medicines were not available. All those treatments, actually non-COVID conditions were actually ignored during this period, including people with disability who had various conditions. Now, there is another warning that various people are making, various experts are making, and that is another health crisis that is actually waiting to happen before us. And that is the issue of mental health. Loss of livelihood, the fear generated by constant bombardment of COVID news, lockdown, uncertainty exams, as also students actually, when their exams will be held, whether it will be held or not, whether the sessions or classes will start or not. All these things have actually huge mental impact, huge mental fallout actually. But is the country prepared to tackle this mental health crisis? No, unfortunately no. The NIMHANS Bengaluru had come up with a study in 2018. It said the treatment gap is 83%. 83% is the treatment gap. Let us be conscious about it. The same survey also said that the availability of mental health professionals is as low as 0.5 per lakh population in Madhya Pradesh and 1.2 in Kerala. So there is a huge treatment gap that is there before us. We also see that the mental health care that mandates investments to tangible effort, mandates investment. Government has actually not made any effort to invest in mental health as with general health as well. This is one thing. Students have been impacted. Other speakers are going to speak about it. I'm not going to that issue. Now, the issue is we have introduced, the government has actually, during this period, has utilized the situation to pursue its own agenda in various forms. It has also introduced a new education policy 2002. This education policy, at various places, it talks about equity, it invokes the RPD Act, etc., etc. But one thing that needs to be underscored is that privatization, the thrust of the policy is of privatization and commercialization. When that happens, the disabled are going to be left out, they are going to be excluded. Let us be very, very clear about that. Another issue actually that I would like to highlight during, that we have faced during this pandemic period is an increase in cases of domestic and sexual violence against women with disabilities. This frustrated men are actually venting their anger on women. There are many helplines that have been actually established during that period, but they have not been accessible to women with disabilities. And also, let me say, if there is a helpline and a deaf disabled lady or gentleman phones over, who is is it accessible for deaf people? It is not. So this apart, we have one issue that we have been raising since long is that the National Crime Records Bureau does not maintain separate statistics as far as violence against disabled women are concerned. This is one of the issues that we have been raising, and we'd like to raise here too. As far as the Department of Disability Affairs, it's called the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, has actually utterly failed in discharging its duty during this period. It came out with some comprehensive disability inclusive guidelines, etc., and framed, but these guidelines were
more in violation, actually in implementation was more violated than actually being implemented. And it was not mandatory also in many of these guidelines provisions. One issue that we have been saying and we have been stressing about and the government also says that information is key to fighting the pandemic. Information is key, we agree. But are this information being provided in accessible formats? Accessible, whether it's been provided in Braille, whether it's been provided in sign language, whether it's been provided in audio formats. Even the department also doesn't provide this, let alone others, what do we expect from the others? In between all of this, like I said, the government wants to pursue its agenda. It brought about, it proposed to amend the Rights of Persons with Disabilities Act, and it sought to do away with the penal provisions that are contained in the Act. It is after a very long struggle that the penal provisions were actually introduced in the Act, brought into the Act. Now this was actually sought to be removed from the Act, but the disabled sector as one voice actually opposed it. There, of course, there were people who supported it also. A small section also supported it, but large section of the disabled population, disabled circles actually, activists and organizations actually opposed this, and the government had to as hastily as it brought it, it actually had to be withdrawn also. But there were some good practices also during this period. I would not say that entire country has been the same, but there have been good practices. Some practices followed in Tamil Nadu, some practices followed in Kerala. Kerala has been an example for all of us in various other things. I'm not going to all those things, but it made guidelines in accessible format. It had lists in advance of people with disabilities and people with elderly to whom it provided rations, etc., etc., and all. So all these things are there, which could have actually replicated in other states. Center could have provided guide, but this has not been happening. In the light of this, we have a certain set of demands that I'm placing here. I'm not going to those demands, but let it come at the end. But what we are saying, what we're generally emphasizing is, all crisis actually provides opportunities. And this is what the ILO also says, that all crisis brings opportunity, and the opportunity of the movement is to make inclusion of all previously marginalized groups, including persons with disability, a central element of all responses. By building on our experience with disability inclusion and deepening partnership, we can support a sustainable and inclusive response to COVID-19. With these words, I end. Thank you very much for providing this opportunity to place the views on behalf of the disability sector. Now, I would like to Nancy to please play the videos, please. All other speakers, actually, we had ensured that they sent the videos earlier. So all videos have been lined up, and now Nancy, please play the videos. One announcement, I request all the speakers to switch off their videos except for the sign language interpreters. Thank you.
Respected chairperson, thank you for giving me this opportunity to speak. Let me bring to the attention of this esteemed house the problems faced by students, and specifically students with disability on account of this pandemic and pandemic-induced lockdown. Now, the lockdown abruptly started in the middle of an ongoing semester. Unfortunately, 5 months after this lockdown, we have very little clarity on how the semester will end and how the academic year will proceed. The government, as we are hearing now, is keen on conducting exams for final year students. But students are having a lot of stress, and depression has become the dominant sentiments among students. This government, instead of conducting an exam on their own conduct, is keen on conducting exams on students. This has caused a lot of problems for students, and we have no clarity on when the new academic year will start and how we are going to take ahead the process of admissions, and we are lacking clarity on this. Let me also bring to the attention of this house the issues related to online classes. Now, the digital learning has become the go-to method for our academic community, but as a country like that of ours with diverse socioeconomic backgrounds, I would like to emphasize in this house that many students are facing problems while accessing online materials. A lot of students with disability, I should say, lack the assistive devices they use in their everyday academics when they are at home, and that this put them at a disadvantaged position in pursuing the academic material. This has compounded the problem, and many students who stay on campus, and students with disability, and they access their academic material using assistive devices, cannot stay on campus as of now, and they are forced to learn from home, but this cannot happen obviously because of this lockdown. Now, we need more thought to be put into this. There need to be more measures taken so that the learning process is inclusive, therefore I speak here and I support the resolution moved by Sri Muralidharan, and I hope that the government put more attention into solving the problems of students, both on account of conducting exams and making the online classes more inclusive. Thank you. அன்பிற்குரிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்தியா உள்ளிட்டு உலகம் முழுவதும் கோவிட்-19 வைரஸ் தொற்றின் காரணமாக பாதிப்பும் பயமும் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் ஜனதா பார்லிமெண்ட் நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருந்து விவாதித்துக் கொண்டிருப்பது என்பது ஒரு பாராட்டுக்குரிய நல்ல முயற்சி. நான் 2 விஷயங்களை முன்வைக்க விரும்புகிறேன். இந்திய அரசிடம் மாற்றுத்திறனாளி பெண்கள், குழந்தைகள் எத்தனை வகையானவர்கள், எவ்வளவு பேர் என்கிற எந்த விதமான தகவல் சேகரிப்பும் இல்லாத சூழ்நிலையில் மத்திய மாநில அரசுகளுடைய பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விசேஷமான அறிவிப்புகள் இல்லை என்கிற நிலைதான் இன்று வரைக்கும் தொடர்கிறது. குறிப்பாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், 2016ஆம் ஆண்டு புதிய சட்டத்தில் நிறைய ஷரத்துக்கள் இருந்தாலும் பெண்களுக்கான விசேஷமான சில பிரிவுகளும் கூட இருக்கு. ஆனால் இந்த கோவிட் காலத்தில் மாற்றுத்திறனாளி பெண்கள், குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கோ பராமரிப்பதற்கோ அவர்களுக்கான விசேஷமான எந்த விதமான தகவல்களும் இல்லை என்பதைத்தான் நம்ம இன்னைக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். இன்னைக்கு மாற்றுத்திறனாளி பெண்கள், குழந்தைகள் ஏகப்பட்ட விவரங்கள் இன்னைக்கு என்ன வருதுன்னா, அவங்க பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகிட்டு இருக்காங்கிற தகவல்கள் நிறைய வருது. ஆனால் அந்த தகவல்கள் வழக்குகளாக மாறுதான்னு சொன்னால் அது இல்லை. ஏன்னா அப்படி பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய பெண்களுடைய எண்ணிக்கை, குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை என்பது வெளியில் சொன்னால் கேட்பாற்ற முறையில் தான் இன்னைக்கு போயிடுதுங்கிற காரணத்தினால வெளியிலே வரமாட்டேங்குது. காவல் நிலையத்துக்கு போக முடியாது, அல்லது சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளாது, அந்த நீதிக்கான நெடும்பயணத்தை அவர்களால் தொடர முடியாது, குற்றவாளி தரப்பிலிருந்து வரக்கூடிய அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ள முடியாது என்கிற சூழ்நிலையில் தான் மாற்றுத்திறனாளி பெண்களோ குழந்தைகளோ சீக்கிரமாக இலக்காகி விடுகிறார்கள். ஆகவே மது பழக்கத்திற்கு ஆளாகக்கூடிய காம வெறியர்கள் அப்படிப்பட்ட பெண்களை இலக்காக்கி இன்னைக்கு பல்வேறு துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகக்கூடிய இந்த நிலையை தடுப்பதற்கு ஒரு விசேஷமான கவனம் இன்றைக்கு தேவை என்பதை நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். 2வது, பெண் குழந்தைகளுடைய கல்வி. மாற்றுத்திறனாளி பெண் குழந்தைகளின் கல்வி என்பது ஏற்கனவே அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. இன்றைக்கு
இன்றைக்கு ஆன்லைன் கல்வி என்பது சாதாரண மாணவர்களுக்கே பிரச்சனையாக இருக்கிற போது இந்த மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு அந்த குழந்தைகளை ஒரு இடத்தில் உட்கார வைப்பது, அவர்களுக்கு ஆன்லைன் கல்வியை கற்றுக் கொடுப்பது என்பதெல்லாம் சாதாரண விஷயமே இல்லை. அவர்களுக்கு நெட் வசதி வேணும், அவங்களுக்கு போன் வசதி வேணும். இதை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு பெற்றோர்கள் நேரத்தை செலவிட வேண்டும் என்கிற சூழ்நிலையில் வாய்ப்பில்லாத போது ஆகவே கல்வி என்பது புறக்கணிக்கக்கூடிய விஷயமாக மாறுகிறது. அதிலும் உயர்கல்விக்கு போக வேண்டும் என்று நினைக்கிற பெண் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் அந்த ஆன்லைனுக்கு எப்போ விண்ணப்பிக்கணும், அதுக்கான கால வரையறை என்ன, எந்த விதமான விவரமும் கைட்லைனும் அவங்களுக்கு கிடையாது. யார் அவங்களுக்கு பயிற்றுவிப்பது, ஊக்குவிப்பது என்பது கேள்விக்குறியா இன்னைக்கு மாறி இருக்குது. மாற்றுத்திறனாளி துறையோ பள்ளிக்கல்வித்துறையோ அல்லது உயர்கல்வித்துறையோ யாருமே இதை பற்றி கவலைப்பட்டதாகவே தெரியவில்லை. ஆகவே மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுப்பதும் சரி அல்லது உயர்கல்விக்கு போக வேண்டும் நினைக்கிற பெண் குழந்தைகளுக்கும் சரி, இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கோவிட் காலத்தில் கல்வியில் இருந்து அவர்கள் ஒதுக்கி வைக்கப்படக்கூடிய அபாயம் என்பது ஏற்பட்டிருக்கு. உடனடியாக இந்த துறைகள் கவனிக்க வேண்டும் என்பதை நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். Respected Chairperson, thank you very much for giving me a chance to speak today. During this coronavirus pandemic, people with disabilities are facing many problems, and information is very critical in fighting this pandemic. But people having many disabling conditions are not able to fully access it, and the information which is being provided by the government resources like the TV channel, radio broadcasting and print media etc. are not fully accessible to us. Our specific requirements are not being met, and without this vital information, not only are the disabled at risk, but also they can put the others' life at risk also. We, people with deaf blindness, rely on tactile inputs for our communication needs, but owing to the social distancing norms, we are not able to source out the information properly, and maintaining the physical distancing is almost impossible for us. Young children with deaf blindness and having additional disabilities related to cognition, unless they comprehend, we cannot make them wear masks and take other all precautions. So this puts them more at risk, and along with ourselves, we have to protect others also. This is true for those having intellectual problems. There has been one incident in Kolkata where a father killed his son who had intellectual problem, and the son was not listening to his father and not wearing mask while going out. It has been more than 5 months now, and the situation is not getting any better. For those who have to resume work, government has issued guidelines to maintain contactless work so that they can avoid the risk of getting the disease. But what about us, the deafblind? We need more support. We need to touch others and to get the informations. People with disabilities, especially those who rely on tactile inputs, are feeling totally left behind. Many people with deaf blindness have lost their employment, and they are not able to start all over again. We have lost the little independence we had, and we have become totally dependent. How do the deafblind people maintain social distancing and at the same time remain fully informed? This is the biggest challenge. There have been reports of blind people falling down and no one coming forward to help them. This is tragic. I urge the people in this house to consider our issues and difficulties and address it in a holistic manner. With these words, I strongly support the resolution moved by Mr. Muralidharan. Thank you once again. I'm a person with a disability in urban India. I run an organization in urban India, and that's I've closely seen how in cities like Delhi NCR, persons with disabilities have struggled through COVID. The first challenge came when the lockdown was announced, and attendants and caretakers to persons with disabilities were not really on the exception list, getting curfew passes so that they could serve persons with disabilities. People like me depend on attendants and caretakers for very own physiological needs. I cannot survive without my caretakers. And that's why it was extremely shocking that the government had not really taken care of these things.
persons with disabilities had to struggle going through the bureaucracy of various state governments, ensuring the attendants and caretakers come on the exception list so that they can be given curfew passes as essential services to persons with disabilities during such a time. The second challenge was that even persons with disabilities were not really getting groceries at the doorstep, and the government had not even thought about it. There were a lot of private initiatives that were started, including an initiative I co-founded with a few friends in Delhi called Project Delhi, where we delivered groceries to more than 2,100 people in Delhi. But there was no such government scheme nationally across this country. A lot of NGOs rose up, but I think this is the space area of the government, that if you're shutting down the entire city, how do you expect persons with disabilities to survive, get the basic groceries, etc.? A lot of persons with disabilities also need regular access to physiotherapy, or people with thalassemia and hemophilia need blood. Other persons with disabilities need access to their various other kind of medical therapists. But the government had not really thought through all of this, and it was a challenge to access these medical facilities, which was kind of life-threatening for a lot of persons with disabilities because they could not get access to the medical facilities they require. The next thing that I want to talk about is the work from home, which even the Ministry of Social Justice and Empowerment gave a circular that persons with disabilities who are in government jobs should be allowed to work from home. Soon, a lot of government departments started calling their disabled employees back to the workplace during that particular time. And the Ministry of Social Justice and Empowerment was acting more like a grievance redressal cell for people with disabilities, who was writing to them, and then the Ministry of Social Justice was responding to them by writing to the specific ministries. It is unfortunate that none of the other ministries really had that sensitivity towards disability during these crucial months. And I think what is really needed is more communication between the Ministry of Social Justice and Empowerment and various other ministries. Maybe having a nodal office in every ministry, or having a joint secretary level expert in every ministry, which might actually be better because that person would be empowered to make decisions, whereas looking at disability in policy itself, rather than looking at disability in a reactionary way. The challenges of children with disabilities such as intellectual disability, cerebral palsy, autism, specific learning disabilities have escalated post-COVID-19 and the lockdown. The therapy centers, the special schools, and the few inclusive schools, which were earlier too inadequate, unaffordable, or inaccessible to the majority, are now physically shut for all. The livelihood of the single earning member in the family is also at stake. The mothers are now burdened with the household chores throughout the day with all the members at home. The children, unable to comprehend the lockdown and inability to move outside, the lack of peer interaction has caused them a deterioration in the emotional health, which leads to aggression, meltdowns, and the likes, which the parents are having to deal with. With such being the emotional health of a family of a child with disability, it looks like we are headed towards a mental health crisis too. With sensory issues, communication disabilities, drooling, it has become a Herculean task for parents to teach the children to use the masks and even wash hands regularly. With children with autism, the online classes, whether group or one-on-one, were reasonably ineffective, as the mothers had to be along with them for them to comprehend what the professionals were trying to teach them through a tiny device now. Most of them rejected it because of anxiety issues. For children with cerebral palsy, where movement and posture is most important, and to prevent muscular atrophy and prevent contractures, it was now upon the parents to make sure that the range of motion happens every day and such exercises are done meaningfully daily, and they have to find energy for the same. So there was an additional burden on the mother to now train herself and then train the children. For children with specific learning difficulties, and with the schools moving into online examinations as well, nobody knew who was to do the assessments now, who was going to give the disability certificates for them to avail the exam accommodations. They were not able to comprehend the influx of information that came via YouTube, videos, PowerPoints, and texts, and they found, and the little voices that they had even earlier have been muted, and they're almost invisible in this group online classes. With such wide range of issues, despite these issues,
It looks like the authorities have been found wanting in responding to it. Respected to chairperson, thank you giving opportunity to speak. कर्नाटका गवर्नमेंट फ्री रेशन देने को ये लॉकडाउन टाइम में पूरा फेल हो गया। डिजेबिलिटी एंड ट्रांसजेंडर को स्कीम नहीं बनाया, एक फाइनेंशियल एसेस नहीं किया, क्या चाहिए तो वो नहीं बनाया। ट्रांस एंड डिजेबिलिटी लोग को रेशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है तो रेशन कार्ड है तो रेशन लेने के पैसा नहीं है। कर्नाटका गवर्नमेंट डिजेबिलिटी को ट्रांसजेंडर को 4 मंथ्स का पेंशन पेंडिंग दिया, अभी नहीं दिया वो। ये कर्नाटका गवर्नमेंट टोटली फेल्ड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस किया, ये कोविड-19 बजट रिलीज में 1000 रुपीस फॉर डिजेबिलिटी देने के अनाउंस किया, बट 90% डिजेबिलिटी को ये पैसा नहीं गया। ये जोक कर रहे हैं हमारा कम्युनिटी के साथ। क्यों हमारा कम्युनिटी को साथ अभी ये लॉकडाउन में ज्यादा प्रॉब्लम में है हम। तो हम मुरलीधरन रेजुलेशन को हम सपोर्ट दे रहे हैं। थैंक यू। A group of disability rights organizations had visited the northeast part of Delhi, where communal violence took place in end February 2020. During our limited engagement in one of the relief camps at Eidgah in Mustafabad, we found over 30 persons with pre-existing disabilities. We learnt that they had found it harder to escape and manage. Many had lost their aids and disability-related documents, and in some cases their tricycles and wheelchairs were burnt by rampaging mobs. The other category was of people who acquired a disability due to the violence. One of the most chilling clips of the Delhi violence was of a young man having been beaten mercilessly, resulting in his loss of sight. He was not alone. There were 4 young boys, all in their teens, whose lives shattered with bullets piercing through their spines, rendering them paraplegic. In another case, a father lost his eyesight to acid in an attempt to save his daughter from a frenzied mob. And there are countless others who suffered permanent disabilities due to the violence, some in a bid to escape from it, even jumping from several floors above. There is also the issue of mental health. There were people who already had a pre-existing mental condition. Scenes of the killings, violence and destruction has led to a sharp increase in the number of people who would be requiring counseling and treatment on a permanent basis. People continue to have nightmares, suffer from anxiousness and severe depression, amongst others. It was in this situation that the lockdown was announced. Ongoing treatment in hospitals were disrupted, planned interventions were put on hold, regular follow-ups have been difficult, with OPDs being closed, transport being limited, and most medical services catering to only COVID-19 and emergencies. Rehabilitative physiotherapy also got put on hold for many. Disability relief and support services took a backseat. Mental health services were also disrupted. Getting access to ration, aids and assistance being provided, repairing and replacing aids and appliances continue to be big challenges even now. Added to this was the lack of ensuring accessibility in provisions and communications. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम सुरेश दोनगे। मैं द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया के लेप्रोसी मिशन कोठारा हॉस्पिटल अमरावती महाराष्ट्र में एज अ प्रोग्राम मैनेजर काम करता हूँ। 1996 में मुझे कुष्ठ रोग हुआ था। उसके बाद में दवाई खाकर मैं पूरी तरह से ठीक हुआ हूँ और अभी मैं बाकी कुष्ठ रोगी और विकलांग लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, उनके पुनर्वसन के लिए। जब ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो आम जनता को बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारी समस्या से उनको गुजरना पड़ा, लेकिन उसमें हमारे कुष्ठ रोगी भाई बहनों को और ज़्यादा समस्या से गुजरना पड़ा। जैसा कि जो हमारे कुष्ठ रोगी पेशेंट जो थे, वो जो जिनको ट्रीटमेंट चल रहा था, जो स्टेरॉइड पे थे, उनको आप यहाँ पे हॉस्पिटल तक नहीं आ पाए या पीएचसी तक नहीं पहुँच पाए। ऐसे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, क्योंकि स्टेरॉइड का ऐसा होता है कि अगर एक दिन भी उसमें अगर गैप आ जाए तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं।
दूसरा ये है कि जो कुष्ठ रोगी लोगों को अल्सर है, जख्म है, वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, बस बंद थे, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद था और वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए या डॉक्टर उन तक नहीं पहुंच पाए और इसकी वजह से उनकी जो अल्सर है उनको दवा नहीं मिल पाई और उनके अल्सर बढ़ गए। जो लॉकडाउन में जो क्वारंटाइन सेंटर थे, जो जहाँ पे लोग रह रहे थे, जिनको जो सस्पेक्टेड केसेस थे, उसमें कुष्ठ रोगी लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि पहले ही कुष्ठ रोग में भेदभाव होता है, उसमें और कोरोना हो गया तो उन पे वहाँ पे उनको कंफर्टेबल नहीं था। जो भी क्वारंटाइन सेंटर थे उसमें इवन जो एक्सेसिबल होने चाहिए विकलांग लोगों के लिए, वो भी क्वारंटाइन सेंटर एक्सेसिबल नहीं थे। जो कुष्ठ रोगी लोगों को काम मिला था, ऐसे कुष्ठ रोगी लोगों को काम जल्दी कोई देता नहीं, लेकिन जिन लोगों को काम मिला था वो लॉकडाउन की वजह से उनका काम चला गया, उनकी रोजी रोटी चली गई और उसके जो रोज के जो खाने के हैं वांदे हो गए। उसमें यह है कि जो कुष्ठ रोगी लोग हैं, जो जिनको डिफॉर्मिटी है, जो विकलांगता है, उन लोगों को तो हर कोई काम नहीं देता है, तो ऐसे लोगों को मजबूरी में बेगिंग का या भीख मांगने का काम करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे कुष्ठ रोगी भाई बहन हैं जो भीख मांग के अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई लोग बाहर नहीं घूम रहे थे तो उनको भीख भी नहीं मिल रही थी। और वो लोग ऐसे थे कि जो ना कॉलोनी में रह रहे थे ना गांव में रह रहे थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो उनको जो रेशन वगैरह जो रिलीफ मटेरियल मिलता है वो भी उनसे उस मटेरियल से भी वो लोग वंचित रह गए, तो उसको और ज़्यादा समस्या से उसमें गुजरना पड़ा और उनके रोज़ के उनको रोटी मिलने का मुश्किल हो गया था। अपने भारत देश में ऐसे 102 ऐसे कानून है जो कुष्ठ रोगी लोगों के खिलाफ है, जो कुष्ठ रोगी लोगों को स्टिग्माटाइज करते हैं। जो पेंशन मिलता है वो हर स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उसमें बहुत सारा जो स्टेट है उसमें 200 रुपये भी पेंशन नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या उनका गुजारा होगा। तो उस राज्य में, उस स्टेट में कुष्ठ रोगी लोगों को और ज़्यादा समस्या से गुजरना पड़ा। जो सर्टिफिकेट होता है कुष्ठ रोग का, उसमें भी नेशनल लेवल पे स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन नहीं है, तो अगर मन में आया तो उनको 40% दिया जाता है या फिर उनको वापस भेज दिया जाता है। तो आम जनता को कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हुए, बहुत सारी दिक्कतें आ गई, लेकिन उसमें हमारे कुष्ठ रोगी भाई बहनों को उसमें ज़्यादा दिक्कतें आ गई, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है और मैंने खुद उसको देखा है, एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू। I mean, looking back into the issues of the disabled people, the UN Secretary General very categorically stated and urged the global governments to look into the issues of the livelihood of 100 million disabled people, which does not exclude the disabled numbers of this country. It also included the disabled people of India. I mean, the issues of disabled people was very clearly fixed by a National Sample Survey Organization's report in 2018, which stated that 77% of disabled people lean back and depend upon their families, their own patriarchal, matriarchal families for their livelihood, and remaining 23% only earn a little bit of money by doing some petty jobs, including petty agricultural jobs. Now, looking at 77% and this 23%, both together become the compartment of the disabled sector, the universe of the disabled sector to be addressed. Now, did the government of India post-lockdown COVID-19 has some way worked out on the disabled people's livelihood? We gave only 1,000 rupees. Now, did we reach to the disabled people and disabled sector as whole? No. Because only 28% of the disabled people have got the certification. Remaining 72% of disabled people since 1995 have not got the certification. Certification is a prerequisite to prove himself or herself as disabled and take the money of the government of India. Given this a situation, you should look at, or we must understand, the livelihood difficulties of the disabled people. Now, enough has been spoken, enough has been written, spoken by the media. What exactly is the way forward? We all speak about the problem. The way forward is we have National Handicap Finance Development Corporation. The 20,000 crore package for disabled people must also reach to the National Handicap Finance Development Corporation. We must strengthen the corporate, the local level panchayats. We should strengthen the cooperatives. The local level panchayats must be enabled to issue temporary disability cards or certification which can be ratified later, but it is prerequisite for us to reach to the 72% of the remaining disabled people. We will have to waive the loans which have been bought by the disabled people for the last 2 or 3 years, because that will enable the disabled people to start a fresh entrepreneurial initiative. Now, it is not that easy for the disabled people to get money, because most of the state channelizing agency of the National Handicap Finance Development Corporations come under the banking sector, Banking Act.
that prevents or restricts the disabled people in accessing the loans for the disabled people. I think disabled people do deserve greater attention. We need a guarantee fund for the disabled people, and if these things could be ensured, I think disabled people livelihood can be protected and promoted, and COVID-19 will not deter the livelihoods of the disabled people. Nancy, can we go on to the next video, please? The concluding remarks by Ms. Poonam Natarajan, former chairperson of the National Trust. We can't hear anything. There's another video to be played, Nancy. Only you have to speak louder. We can't hear anything. Okay. I request everybody to switch off their videos except for the interpreters, sign language interpreters. At least if many people have seen it on their pages or went to the site or whatever. It is really good. Is it? Yeah, yeah. About 1 lakh. Oh no. In Indian current. Good morning. I would like to start by saying that disability is a cross-cutting issue, and all the communities and vulnerable groups that we've been talking about here, people with disabilities belong to them. And therefore, they face the same challenges as other people in these groups. But besides that, they also have certain specific challenges. And in this session, they have talked about those specific challenges and a real wide range of them. And we really need to think about them and prioritize and see how we can support and find solutions. I think the first and the most important issue is that of certification, because certification is very tedious to get, and it takes a long time. And first of all, it needs to be fast-tracked and simplified so that more and more people with disabilities can get their entitlements and get some kind of support. Of course, the entitlements themselves are highly inadequate. They have said 1,000 rupees per person, but for the entire lockdown period. And that is not going to really help because disability costs are there. People with disabilities have to spend much more on transport, on assistive devices, on caregivers, and now they're mostly dependent on their families, and families are now have lost their incomes, lost their livelihoods, and they're not going to be able to support the disability costs of this member in their family. Therefore, I think it's important that we advocate for much higher support, and that more and more people can get this support, because at the moment, even all the people who've got certification haven't got their 1,000 rupees. And more people need it. So I think that's very, very important. The other thing is the medical facilities. It's been very difficult. People who need regular need to go to the hospital, like people with hemophilia and thalassemia need blood, or certain people need certain drugs which are not easily available. And these solutions have to be found so that these people do not get more disabled and also can lead a regular life, and this should be made, they have access to what their medical needs are. The issue of caregivers, actually, that got solved with the MSG, that did support with the GO, but not fully solved. A lot of people could not get their caregivers, but that's another issue, because that's the issue also with social distancing. There was a lot of worry among people with developmental disabilities like autism, cerebral palsy, deaf blindness, with multiple disabilities, intellectual disabilities, because they're not able to practice social distancing. They need a lot of support for their activities of daily living. And how do they solve those problems? And I think we have to look for those solutions, just like of wearing a mask, which is very difficult for children with autism, and what do we do about it? There have been some innovative solutions which parents have come up with,
But it is generally a difficult situation which families are facing, especially with the children are locked down all the time. There are no schools, there are no therapy centers, and they have to take care of all the needs. I think online education is another important area, especially it's been flagged about the examination and how they're worried and depressed, and we need to see how we can make it much more inclusive and make sure that people with disabilities can also find solutions to many of the issues that they face. Thank you so much. I think we can, Nancy, can we proceed to the voting, please? If you can bring the resolution on the screen. And so it has been a very good session. Various range of issues have actually been covered during the session. I'm not going to details because of lack of time. Now I request Nancy to please bring the questions onto the screen, please. So do you want to go to the questions directly, or can I show the resolutions first? You can show the resolution also, please. Okay. Just a second. The resolutions are on the screen, Bolikaranji. Yes, second slide, please. I hope this has been read. Now, can we go to the voting, Nancy? Because I think. All issues except the last two, actually, amending of the Constitution and amending the RPD Act have been talked about in the session. Questions are on your screen now. सवाल आपके स्क्रीन पे हैं. जो लोग कंप्यूटर से जूम यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं, वोटिंग के लिए स्क्रॉल करें, आपको सारे सवाल नीचे दिखेंगे. जो लोग फोन से वोट कर रहे हैं वो कृपया नेक्स्ट पे क्लिक करें बाकी सवालों को देखने के लिए. People who are voting from their computers, please scroll down to see more questions. People who are voting from their phones, please click on next to see more questions. You have 30 more seconds to vote. Nancy, the polling is over. Yes, it is over. You can share the results. I'll share the results. Actually, we had actually put up 6 questions. One is, should the government provide minimum support of 5,000 per disabled to all per month to all disabled? It has been 100% voting for that. People, the entire house has voted for it with no exceptions. Should the government allocate 5% budgetary support to all ministries for implementation of RPD Act? It has been 100% voting for that resolution also. And should all disabled who register under Manrega and the proposed Urban Employment Act be provided jobs? That also has received 100% polling, 100% votes. Should government provide devices with accessibility features to students with disabilities? That has received 97%, though 3% have actually voted against it, but 95%, the overwhelming majority has voted for it. And should the healthcare system be made accessible and more allocations for mental health? This has also received 100% vote.
And should NCRB, National Crime Records Bureau, maintain separate statistics on violence against disabled women? Here also 100% voting in favor of the resolution. And as far as Article 15.1 and 16.2 of the Indian Constitution to amend it to prohibit discrimination on the ground of disability also has received 100% voting. And for this amending Section 3.3 of the RPD Act, actually, 3% of people have actually voted against the resolution, whereas 97% have voted in favor of the resolutions. So with this, I'm closing this voting, and I'm coming to the conclusion of this session also. But I will end with a quote from a famous poet, Altaf Hussain Panipati, who said, "तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, ना किसी हमवतन को समझना गैर." Thank you. We'll now proceed on to the next session, and that is on elderly. Can I read out the name of the speakers, please? Yeah. 1 minute. I'm just searching for the speakers. Just a minute. We have in this session actually Northi by actually Hindi video in Hindi will be played. Then we have Matthew Cherian, Anupama Dutt, and then the video from Pension Parishad. Then pension and ration, another video, and then another video on pension. There are actually accepting Matthew Cherian and Anupama Datta, the rest of all our videos. So can we begin by playing Northi Bai's video, please? I request all the speakers to please switch off their videos except for the sign language interpreters. Thank you. पेंशन नरेगा 3 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बूढ़ा लोग है, मान पेंशन की बहुत आवश्यक जरूरत है बहन, क्योंकि बूढ़ा माँ बापा ना कोई भी रोटी नहीं देवे, सबने घर के बाहर निकाल देवे, तो पेंशन हुए तो आपका वे खुद खा सके। दूसरी बात है कि राशन के महीने भी जो भी धान मिल रही है, लॉकडाउन की टाइम के महीने 10 किलो धान दियो, वो भी बहुत अच्छे काम दियो, और अब भी देना चाहिए। 10 किलो धान, एक आदमी को 10 किलो धान हुए तो आराम खा सके। आधा भूखा सोया, और नरेगा नहीं चाली जितना तो बहुत महंगी हालत खराब हुई। और नरेगा चालियो तो भी महीना जटा 100 आदमी जटा 200 जटा 400 जटा 700-800 जगह की डबल लोगों की मांग होगी, और हर काम बंद हो गया। ये लॉकडाउन का महीने कोई काम पर नहीं लगाया लोगों ने, अब भूखा मरवा की बारी आ गई। कई लोग भूखा सोया है, बच्ची त्राही कर रही है, कोई ने सब्जियां नहीं मिल रही है, कोई ने रोटी नहीं मिल रही है, कोई ने दूध नहीं मिल रही है, कोई ने कुछ भी नहीं मिल रही है। बस वो दान दियो तो लेट धान दियो, 10 किलो धान दियो तो वो भी लेट दियो। जी टाइम में मुसीबत पड़ रही है जी भगत का, तो कोई सरकार कोई राम राज कोई भी आडो को ना रही है दियो, जद बैंक की थोड़ी सी काया सुधार पर आई है। और भी नरेगा की जरूरत है, बाहर भी नरेगा की जरूरत है, काम कुछ भी नहीं है, सब बेरोजगार हो रही है। मोटियार ले, लुगाई ले, बच्चा ले, सब बेरोजगार हो रही है। और धंधो नहीं हुई, नरेगा नहीं हुई, और नरेगा आबा के खातर ही लियाबा के खातर नरेगा चलाबा के खातर लोगों ने अति अवस्था है कि भगवान वहाँ को एक धनी अलग हुआ है। नरेगा चालियो नहीं तो बेको बस जीव शोर हो जाए कि एक घर का 2 आदमी भी मर सके, 3 भी मर सके। बेरोजगार है जो खाई करे। लॉकडाउन चाल गया, जब जो त्राई करवा ला गया, कोई पीछे नहीं देवे, कोई आमा समा मिलवा नहीं देवे, कुछ भी नहीं, तो भी टेम का महीने तो बहुत बुरी हालत हो रही। और बुढ़ापा की पेंशन बुढ़ा आदमी ने तो कोई टुकड़ो ही नहीं डाला है, बिल्कुल बाण काट दिया। और बुढ़ा आदमी की पेंशन चालू होगा के बाद में बुढ़ा आदमी की एक नया जीवन आयो है कि वाकई में हमारा 700 आवे, 800 आवे, 500 आवे, 1000 आवे, 1500 आवे, बाँव में गुजारो करवा की एक उम्मीद रखे बुढ़ा आदमी तो कि हमारी पेंशन आ रही है। राशन भी जब नरेगा की लॉकडाउन की टाइम का महीना 1 महीना बाद में दियो दान, 1 महीना तक तो लोग यहाँ थड़पड़ावा ला गया, कबूतरों थड़पड़ावा जान, पची एकदम 10 किलो धान दियो तो लोगों को जीव भी शुरू हुई कि भाई का हमारे भूखा नाल थी, साग सब्जी नहीं मिली तो रोटी तो दियो, मैं मर्च 8 रोटी तो दियो।
Can we move on? Matthew Cherian, please. Matthew Cherian, you're online. Can you move on to Anupama, please? But Matthew is not here. There's some connectivity issue. Okay, then we can move on to Anupama, please. Anupama Datta, please. Thank you, Mahidharan sir, and thank you for inviting me and giving me this opportunity. सुबह से मैं सेशन के साथ ही हूँ और बहुत सारी बातें सुनने को मिली और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई बिकॉज मैंने भी झारखंड में और जगह पे डिस्प्लेसमेंट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के द्वारा हुआ था उसमें बहुत काम किया था. तो मुद्दे तो सब सेम ही हैं. आई थिंक अगर हम शेड्यूल ट्राइब का देखें या महिलाओं का देखें या और किसी भी वल्नरेबल कम्युनिटी का देखें और एल्डरली का देखें तो मुद्दे सेम है. मुद्दे यही है कि सोशल सिक्योरिटी नहीं है. मुद्दे ये है कि एक्सेस टू बेनिफिट्स नहीं है, एक्सेस टू वेलफेयर नहीं है. अगर लॉज हैं भी तो वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होते. वो एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज हैं. शेड्यूल कास्ट के लिए एक डिफरेंट तरह का एक्सेसिबिलिटी इशू है टू गेट द लॉ इम्प्लीमेंटेड. लेकिन एल्डरली के लिए भी अगर आप देखें तो जो लॉ है वो इतना ही लचीला है और इतना ही बैडली इम्प्लीमेंटेड है कि उसका कोई फायदा किसी एल्डरली को मिलता नहीं है. तो अंडर रिव्यू भी है. अगर आप लोग में से कोई चाहें तो उसे देख सकते हैं. उसमें सुधार भी गवर्नमेंट पूछ रही है, तो अगर आप चाहें तो सजेशन दे सकते हैं. लेकिन सोशल सिक्योरिटी का मामला जैसे नौरती बाई ने भी बताया कि सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मामला है. और ये कोविड-19 के बाद जब से सडन इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से सिचुएशन बहुत खराब हो गई है. हमारे हेल्पलाइन में भी बहुत केसेस आते हैं ऑफ एल्डर अब्यूज, नॉट जस्ट इन पुअर फैमिलीज बट ऑल्सो इन मिडिल क्लास फैमिलीज जिनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन अब ज्यादा हो गया. नौकरियां जा रही हैं, घर पे बैठे हैं लोग, कन्फाइंड हैं. तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट को देखने हैं. और ये इश्यूज आज के नहीं है, सिर्फ आज थोड़े मैग्नीफाई ज्यादा हो गए हैं. अगर हम पॉलिसी देखें तो भारत सरकार ने सन 2000 में एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी जो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है. लेकिन काम कुछ नहीं किया उसके ऊपर. काम इतने स्लो स्पीड से किया कि वो ना के बराबर है. अगर आप डेमोग्राफिक्स देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो एल्डरली है वो एक हमारे लार्जली ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है और उसमें भी जो 80 से ऊपर लोग हैं वो सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग डेकेड्स. तो ऐसा अनुमान है यूएन का कि 2050 तक मतलब 30 सालों में हमारे एल्डरली की पॉपुलेशन 20% हो जाएगी हमारी टोटल पॉपुलेशन की. तो अगर उस 20% पॉपुलेशन जो होने वाली है अगर उसका हम ध्यान ना रखें और उसके बारे में ना सोचें, प्रोग्राम्स ना बनाएं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे. अगर हम पुराना रवैया लेके चलें और कहें कि आप डिपेंडेंट हैं और आप रिटायर हो जाइए और आप सिर्फ पेंशन पे काम करिए तो आई डोंट थिंक दैट इज फीजिबल, वायबल और सस्टेनेबल. उसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि अब सरकार की ये नीति है कि लीव नो वन बिहाइंड. उन्होंने बहुत जोर देके कहा कि वी विल लीव नो वन बिहाइंड. अगर ये सरकार की मंशा है तो फिर सरकार को ये अपने सारे कार्यों में भी और सारे प्रोग्राम्स में भी इसको दिखाना चाहिए, बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए और थोड़ा ज्यादा एफर्ट करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए. This will not happen just by the regular, implementation of projects and schemes, but government will have to take some extra steps. And also, जैसे हम पार्लियामेंट्री कमेटी को भी हमने ये बात कही थी कि आप सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी नहीं कर रहे और बिहेवियरल चेंजेस भी नहीं कर रहे. जब एल्डरली किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी आदमी को अप्रोच करते हैं फॉर एनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लॉ और समथिंग तो उसका रवैया बहुत ही लैकेडाइसिकल होता है, बहुत ही ढीला रवैया होता है कि हाँ आपका काम भी देख लेंगे. लेकिन उस एल्डरली को कितना त्रासदी उससे होता है ये हम कभी भी ध्यान नहीं देते. और पर्टिकुलरली विमेन और जो वृद्ध व्यक्ति जो डिसेबल्ड हैं या जो जिनके पास और भी समस्या है वो तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि एक्सेस का बहुत बड़ा इशू होता है. अब फर्ज कर लीजिए कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बार बार आना तो बहुत ही बड़ी चुनौती है, पर्टिकुलरली फॉर विमेन. अगर महिलाएं हैं तो किसी भी अगर संदर्भ में है, चाहे वो मिडिल क्लास में है या कहीं और भी हैं, तो उनके लिए और भी ज्यादा समस्या है. एल्डर अब्यूज के केसेस में ज्यादातर विमेन के लिए रिपोर्ट होता है और प्रॉपर्टी क्लास में तो बहुत ज्यादा होता है. अगर मैं एक ओल्ड विडो हूँ और मेरे पास एक मकान है जो कि दिल्ली के किसी पॉश इलाके में है तो जाहिर सी बात है कि मेरे 3 बच्चे अगर हैं तो वो तीनों इस बात पे झगड़ा करेंगे कि ये सारा मेरे को दे दो. And then if I don't oblige, then I'm in for all kinds of abuse. And एक abuse के बाद जो trauma जो होता है उसको deal करने के लिए अगर कोई system हमारे पास ना हो
which is accessible and which is dependable. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं भी तो वो डिपेंडेबल नहीं है। हमको पुलिस पे उतना भरोसा नहीं रहता कि हम जाएं तो हमारे साथ क्या बर्ताव होगा। सुबह ये आई थिंक वन ऑफ द यंग लॉयर्स वाज टेलिंग अस कि रेप विक्टिम को ही अपराधी माना जाता है। शी इज नॉट ट्रीटेड विद द रिस्पेक्ट एंड द सेंसिटिविटी दैट इज रिक्वायर्ड। दैट हैपेंस टू एल्डरली एज वेल, हैपेंस टू एवरीबडी। स्टेट मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट को देखेंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो वो वल्नरेबल सेगमेंट्स के लिए एपैथी अक्रॉस द बोर्ड है। वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं है, एल्डरली के लिए भी है, विमेन के लिए भी है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी है, सबके लिए है। सिर्फ नाम के वास्ते बॉडी बनाने से या नाम के वास्ते लॉ बनाने से और यूएन में जाके बोलने से कि हमारे पास लॉ है और डेटा है, जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं बदलती, वो बद से बदतर हो रही है। ये हम भी देख रहे हैं अपने अपने जो हमारा जो नेटवर्क है, जो हमारे 24 ऑफिसेज हैं अक्रॉस द वेरियस cities in the country, और जो हमारे ESHGs हैं जो गांव में काम करते हैं, about 5000 of them, ज्यादातर बिहार और तमिलनाडु में और केरला में है। वहां पे भी यही स्थिति है कि अगर बाढ़ आ गई बिहार में तो एल्डरली आर द लास्ट वन टू रिसीव एनी हेल्प। डिजास्टर की भी सुबह बात हुई थी, तो उसमें भी हम यही पाते हैं कि एल्डरली को जो एंटाइटलमेंट भी है वो भी उन्हें मिलता नहीं है। उस एंटाइटलमेंट को मतलब लेने के लिए एक बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट उन्हें करना पड़ता है, और सब एल्डरली वो एफर्ट नहीं कर पाते। तो हमारी सिर्फ यही डिमांड रहती है कि आप जो भी प्रोसेसेस हम बना रहे हैं उनको इतना सिंपल होना चाहिए और इतना आसान होना चाहिए, मीनिंगफुल होने के लिए कि उनको एल्डरली इजीली एक्सेस कर पाए। और प्लस जो सोशल सिक्योरिटी का मामला है वो हमेशा से था, अब वो उसको हम हमेशा से आर्ग्यू करते रहे हैं कि पुअर एल्डरली को नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी और जो थोड़े से बेटर ऑफ एल्डरली हैं उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स होनी चाहिए जो उनको conclude. Anupama ji, please conclude. Yeah, next 30 seconds, sir. Just 30 seconds. उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो लॉन्जेविटी का है। अगर मैं आज 60 साल हूँ तो मेरी एवरेज लाइफ स्पैन 20 इयर्स है, जो कि अगले 10 साल में बढ़ के 30 साल हो जाएगी। तो अगर मैं अपने जिंदगी का 1/3 या 1/4 हिस्सा इस सेगमेंट में बिताने वाली हूँ, तो सरकार ने मेरे लिए क्या नीति बनाई कि मैं लाइफ विद डिग्निटी रह सकूं। So it is very important that social security and social protection measures are very sensitively done, and they should be done with keeping the demographic trends in mind. Thank you so much. Thank you, Anupama ji, for bringing various range of issues actually. And you said सरकार तो कह रही है leave no one behind, मगर सबको पीछे छोड़ रही है। केवल एल्डरली को नहीं, डिसेबल को भी पीछे छोड़ रही है। बाकी बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शन, सारे वल्नरेबल सेक्शंस को पीछे। आज सेशन में और कल भी जो वल्नरेबल सेक्शन पॉपुलेशन का जो दिक्कत, इसमें इन तमाम बातों के ऊपर बहुत सारे इश्यूज कॉमन है। इवन अमंग द डिसेबल्ड एल्डरली बहुत सारे इश्यूज कॉमन है। नाउ कैन वी गो ऑन टू द वीडियोस प्लीज? नैंसी, कैन यू प्ले द रेस्ट ऑफ द वीडियोस? Yeah, 1 second. हमार नाम है कलावती और रहे वाले हम अलीपुर के, जिला सीतापुर। और हमारे आदमी को मरे हुए गए हैं 40 साल, और हमारे राशन वहाँ नहीं मिलते, पेंशन विधवा मिलते है 500 रुपया महीना। वहाँ कहूँ 10 महीना बाद आवत, कहूँ 6 महीना बाद आवत, तो वहाँ कैसे गुजारा हो। राशन वो मिलती नहीं है और ना चावल। एक लड़का हमार दिल्ली है, एक लड़का घर में रहा, तो वही के परिवार हुआ दिल्ली वाला अपनो परिवार चलावे कि हमका खर्चा पटवे। और संगठन वाले हमारे राशन कार्ड की फोटो कॉपी जमा करते, वहाँ कोई बनावत नहीं है। और हमारे कैसे गुजारा हो 500 रुपया महीना। काहे भी दाल ले, काहे भी तेल ले, काहे भी चावल ले, काहे भी का ले, काहे भी कपड़ा लत्ता ले, हम काहे भी अपना खर्चा ले। लॉकडाउन हुआ लगत 4-4, 5-5 नहीं जाओ तो बहु पेंशन नहीं निकाल नहारी है, तो हमारे कैसे निपटारा हो। जो है 4-6 महीना बाद कहूँ वही बहू की, तब न वो 4 दिन दौड़ो तब निकलती नहीं है। 500 रुपया महीना दे तो 500 रुपया में जमाने में का होते है, कैसे निपटारा हो। काहे भी का ले, हम का खाई, का करी हैं। अब बूढ़े आदमी हम गेहूँ चावल जैसे देबो करिए तो तेल साबुन निरमा या हर चीज काहे भी हम ले। सरकार जब हमको तो गुजारा देव भाई, गेहूँ चावल तनी मिलबो करिए तो हमार कैसे गुजारा हो। 500 रुपया भेरे तो हमें कुछ पेंशन बढ़ा के दी जाए। लड़का अपनो कार चलाई हैं कि हम का दे हैं।
नरेगा में काम करे जाई, वही में कहते तुम बूढ़ी हो, हम लगाई तुम्हें कैसे, तुम माटी ना ढोई पैयो तो हम बरिके खेप का ढोई पैबा 10 मीटर मट्टी दी जाती तो कहा हमरे ढोई जाई, हम बूढ़े आदमी आए तो हमका तब गवर्नमेंट मदद दे के चाहिए। हाँ लॉकडाउन लगा तब ते और बहुत परेशानी है। आए हमारा We'll move on to the next video. Yes, we'll want to know all about play actually. ना हमारा है पुष्पा अलीपुर रहती है और लॉकडाउन चलती है, पेंशन मिलती है तब वहाँ मिलती नहीं है, कहूँ 6 महीना बाद, कहूँ 7 महीना बाद, कहूँ 10 महीना बाद। और 5 किलो राशन मिलती है तो वही माँ का ओते में है का राशन खाली खा लेते, गेहूँ चावल दाल तरकारी लोन तेल नहीं कोई कुछ खाती सरकार हैं, खाली गेहूँ चावल खा ले बस, चूड़े चबाई ले चबिया नहीं से बस। और पेंशन वहाँ मिलती 500 रुपया, कहूँ 10 महीना बाद, कहूँ 6 महीना बाद, कहूँ साल बाद। और वहाँ जाओ तो वहाँ कहूँ बैंक कहीं, कहूँ विड्राल नहीं मिलती, कहूँ कोई चीज़ नहीं मिलती, कहे भगावे लगते डंडन महिला पुलिस कहीं भागा हुआ लाइन लगा जने लेने वाले बैठे रहते और बड़े बड़े आवत घुस जाते और विड्राल दे देते, पैसा निकाल देते, दोस्त आओ हम का सब का गरीब गुनी को भगाई देती, कहीं जाओ आज ना आयो कल ही आयो परहू आयो यो बताई देती, ना पैसा देती ना कहूँ कुछ। अब 6 महीना बाद, कहूँ 7 महीना बाद, कहूँ 8 महीना बाद, कहूँ 10 महीना बाद। अब किन चाहे तब यहाँ आई रहे तब तेबे नहीं करी आए पर वही घूमी आए न, अब नहीं पाए न। Next video. मैं 75 साल का हूँ मैं और अकेले मैं घर में हाँ, लड़का बच्चा मुँह बाहर चले जाते और न कोई खेती बाड़ी है न मेरे पास है और काम में कहीं गुंजाइश है, मैं का करूँ और का मुझे मेरे को नहीं आवता है। पेंशन का कहते हैं तब जैसे से भरा हो जाता तो वहाँ भरा देते और बस लौटा के चले जाते, आज तक कोई सुनाई नहीं है मुझे। पेंशन मिले थी तुम्हें कि नहीं मिले? हाँ हाँ सरकारी पेंशन। हाँ हाँ का तो कुछ नहीं। कोशिश की हो पेंशन के खातिर तो कहो है 2-4 जने से तो कौन नहीं सुनता है। The last video, please. There's one more video. Yeah, 1 second.
Muralidharan ji, can we move on to the next speaker, Suresh ji? Will please play the video after that. Okay, we have got Suresh is not there. The list here. And if Suresh is there, if Suresh is there, can you please switch on, unmute your mic and switch on the video, please. हेलो. हाँ सुरेश जी, आप अपना माइक ऑन कर दीजिए, माइक और वीडियो ऑन कर दीजिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी 1 मिनट. हेलो. हाँ सुनाई दे रहा, आप शुरू कर दीजिए. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज भी सुन पा रहे हैं, आपको आप देख भी पा रहे हैं. शुरू कीजिए आप. हेलो. सुरेश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप दिखाई भी दे रहे हैं, आप बोलिए. अभी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए. हेलो. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हम तक तो आ रही है आपकी आवाज. ठीक है. सभी साथियों को जिंदाबाद. और जनता पार्लियामेंट में विकलांगों के मुद्दे रखने के लिए और भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि विकलांग वर्ग के मुद्दे विधानसभा में और लोकसभा में तो वैसे नहीं रखे जाते, लेकिन एक ऐसा कोई मंच मिला जिसमें हमारे वर्ग के मुद्दे रखे जा रहे हैं. तो उसमें मैं एक पेंशन के बारे में रखूंगा. मैं अभी मेरा परिचय दे देता हूं. मैं सुरेश कुमार चौधरी और मैं राजस्थान से सपोर्ट फाउंडेशन से संयोजक हूं और विकलांगों के हक अधिकार के लिए काम करता हूं. जैसे अभी बात हो रही है, एक भारत होना चाहिए. अब एक भारत होना चाहिए, बातें तो हो रही हैं, लेकिन जैसे पेंशन को लेकर के असमानताएं हैं. हर राज्य में अलग अलग पेंशन है. जैसे दे रखा है उत्तराखंड की 1000 रुपये है, हरियाणा की 2500 है, दिल्ली की 2500 है, गोवा की 3500 है, राजस्थान की 750 है. जैसे उन्होंने अभी 1 रैंक 1 पेंशन भी कर रखा है उन्होंने, तो हमारे विकलांग साथियों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? 1 नेशन 1 पेंशन हो सकता है. बस सभी जगह एक पेंशन कर दी जाए. जैसे मिनिमम वेतन की आधी पेंशन होनी चाहिए, जैसे 3000 रुपये कर दें, लेकिन सब जगह एक समान पेंशन होनी चाहिए. 1 नेशन 1 पेंशन की अगर ये बात करें तो. और कई जगह जैसे हमारे कई साथी हैं जो चल फिर नहीं सकते, जो सुरेश जी, आपकी आवाज कट गई है, सुनाई नहीं दे रहा. आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कीजिए. अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मगर 5 मिनट में खत्म करना है आपको, ठीक है? बिल्कुल 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 सर. जैसे हमारे कुछ साथी 80% के ऊपर विकलांग हैं, वो सरकार के ऊपर एक बोझ के रूप में, समाज परिवार के ऊपर और समाज में बोझ के रूप में है. तो उनको सरकार की तरफ से कम 5000 से ऊपर पैसा मिलना चाहिए, ताकि सरकार उनको हे दृष्टि से नहीं देखे और सरकार उनको एक बोझ ना समझे और एक ये नहीं समझे कि हम इनकी वजह से परेशान हैं. तो सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए. हाई नीड के बारे में सोचना चाहिए. हाई नीड एक कमेटी उनको बनानी चाहिए. जैसे इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा सकता है. दूसरा ये है कि जैसे दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में 2500 से बढ़ाकर के 5000 रुपये किए थे और किसी भी राज्य ने पेंशन डबल नहीं किया. डबल छोड़ करके जो महीने के महीने जो पेंशन मिल रही थी वो भी टाइम पे नहीं दे रही थी. तो ये पेंशन टाइम से मिलनी चाहिए थी. दूसरी बात यह है कि इस लॉकडाउन की वजह से और कोरोना महामारी का संकट काल आया है, तब से लेकर के बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो सरकार को विकलांग समाज के लिए पेंशन के अलावा अन्य अतिरिक्त सहायता राशि दी जानी चाहिए. दूसरा यह है कि जैसे 1 वर्ष तक के लिए होने चाहिए, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि रोजगार सबके पास छिन गए हैं, रोजगार है नहीं. तो 1 वर्ष तक के लिए उसको पेंशन के अतिरिक्त सहायता दी जानी चाहिए, सूखे राशन की व्यवस्था करनी चाहिए. और दूसरा यह है कि हमारे लोगों की इस लॉकडाउन में मानसिक रूप से भी लोग परेशान हुए हैं, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है और बीमारी मतलब लोगों में बीमारी की वजह से, जैसे कोरोना में हमारे कई लोग पॉजिटिव पाए जाने के बाद में उनका इलाज नहीं होने के कारण मौत का सामना करना पड़ा है. और उसमें भी कर्मचारी हैं जिनको मतलब सरकार ने एक आदेश भी निकाला था कि दिव्यांग कर्मचारी को ड्यूटी आने जाने में छूट प्रदान की जाए, लेकिन ये आदेश का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण हमारे बहुत से कर्मचारियों को
कोरोना पॉजिटिव पाए गए वो ऑफिस में रेगुलर जा रहे थे और आदेश के अनुसार नहीं जाना चाहिए था, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण वो गए और वो कई लोग मारे गए हैं जो हमारे सामने आए हैं। जबकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मतलब कोरोना पॉजिटिव से मारे गए, जिनका प्रचार प्रसार ना तो मीडिया ने किया है और ना किसी मतलब न्यूज वाले ने किया है। दूसरा ये है कि मैं एक लास्ट बात ये रखना चाह रहा हूं कि विकलांगों को केंद्रीय सूची में शामिल किया जाना चाहिए। वो इसलिए किया जाना चाहिए कि जो भी नियम कानून बनते हैं वो नियम कानून ने केंद्र सरकार तो लागू कर देती है, लेकिन राज्य स्तर पे छोड़ देती है। राज्य स्तर उस नियम कानून को बनाने के लिए सालों साल लगा देती है और विकलांग व्यक्तियों को परेशान होना पड़ता है। जैसे कि विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियम 6 महीने में बनने चाहिए थे, लेकिन अभी कई राज्यों में ये नियम नहीं बने हैं। जबकि अगर केंद्रीय सूची में शामिल होते तो ये नियम 6 महीने में बनाने पड़ते और केंद्र में अगर नियम बने होते उसी हिसाब से लागू हो जाते। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विकलांगों को केंद्रीय सूची में शामिल करना चाहिए ताकि उनको बार बार परेशान ना होना पड़े। धन्यवाद, थैंक यू। आपने जनता पार्लियामेंट में मेरे को बोलने का मौका दिया, ये बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे लोग लोकसभा और विधानसभा में तो शायद ये ख्वाब ही रहेगा, ये सपना रहेगा, क्योंकि हमारे लोगों को अभी तक सरकार की तरफ से आरक्षण नहीं दिया गया है। जबकि एसटी एससी सबको आरक्षण है, जबकि ये सबसे वंचित और सबसे नीचे वाले पायदान पर है, इसको सरकार की तरफ से आरक्षण नहीं है। तो हम ये चाह रहे कि जो जनता पार्लियामेंट की जिन्होंने रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुरेश जी। Video is going to be played. Nancy, or any more speakers? Last video of the day, of the session. साथियों को जिंदाबाद। साथी, मेरा नाम रंजित पासवान है। हम अररिया नगर परिषद वार्ड नंबर 6 का रहने वाले हैं और जन जागरण शक्ति संगठन का महासचिव हैं। अभी वर्तमान में अररिया वार्ड नंबर 6 का नगर पार्षद भी हैं। साथी, अभी जो है अररिया जिला के अंदर में अब पूरे बिहार में जब से लॉकडाउन हुआ है मार्च से, उस समय से जितना भी गांव के अंदर में बूढ़ा बुजुर्ग है, मसूमात है, विधवा है, विकलांग है, उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी 3 महीने का पेंशन सरकार लगातार दिया, 600 1500 रुपया, 1200 रुपया, ऐसे करके किसी को पैसा मिला, किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि आधार कार्ड लिंक कर दिया गया है, उसमें फिंगर मशीन नहीं आने के कारण जिसका कि भुगतान होने में बहुत काफ़ी कठिनाई हो रही है। और अभी तक करीब करीब हमारे वार्ड में 84-85 आदमी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसका लिस्ट भी बना के हम अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपे हैं। उस पर भी कोई किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया है। अब उसी तरह से राशन में अररिया जिला के अंदर में बहुत 20 लाख से ऊपर लोग हैं और उसमें करीब करीब 6-7 लाख 8 लाख परिवार को राशन दिया जाता है। उसी में से बहुत लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, फिंगर मशीन नहीं मिलने के कारण जिसको राशन से वंचित किया गया है। सरकार बोला फ्री में 5 किलो अनाज देंगे, वो भी कोई डीलर देता है, कोई डीलर नहीं देता है। उस पर किसी तरह का कोई निगरानी सरकार के ऊपर नहीं है, ना कोई अधिकारी का है, ना कोई देखने वाला है। आज ऐसा परिस्थिति हो गया है कि सीमांचल के अंदर में, पूरे बिहार के अंदर में बाढ़ तबाही मचा के रख दिया है। लोग खाने के बगैर, दाना के बगैर मजबूर हो चुका है, दवाई के बगैर मजबूर हो चुका है। ये जो तानाशाह सरकार जो है, ये मंदिर मस्जिद ये बनाने में लगा हुआ है। लोगों को अभी हॉस्पिटल का जरूरी है, उस शिक्षा का जरूरी है, स्वास्थ्य का जरूरी है और उसको रोजगार का जरूरी है। वो सरकार रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहा है। अभी मनरेगा में भी इसी तरह लूट घसोट भ्रष्टाचार मचा हुआ है, देखने वाला किसी तरह का कोई नहीं है। सभी साथी को जिंदाबाद। और हमारा नाम राधा देवी,
धर्मगाछी पंचायत, सिकटी प्रखंड, जिला अररिया और बिहार से बोल रहे हैं। और अपना परेशानी हम बता रहे हैं। गांव में जब से कि लॉकडाउन लगा है तब से बहुत परेशानी है। खाने के लिए लोग तरस रहा है, खाना भी नहीं मिलता है समय पर। और जो सरकार बोला कि अनाज हम लोग दे रहे हैं, तो अनाज जो दे रहा है वो 5 किलो अनाज दे रहा है। 5 किलो अनाज 1 महीना नहीं चलेगा। और उसमें क्या होता है कि जो बूढ़ा है उसके लिए कोई चीज़ नहीं है। वो राशन जो 5 किलो मिलता है सबको फिंगर लेता है। फिंगर में क्या होता है, उसका फिंगर नहीं आता है, उसमें उसका अनाज से वंचित रहता है। और उसके लिए रोजी भी नहीं है, पेंशन भी समय पर नहीं मिलता है उसको। और इससे बहुत परेशानी लोग हैं गांव में। फिर जो लोग क्या करेंगे, ये जो बीमारी जो कहता है कि कोरोना भी है, तो एस्नोफेलिया तो पहले से है, टीबी कैंसर तो पहले से है। इससे क्या होता है, जो बूढ़ा उसका खांसी होता है, बुखार लगता है, खाने के लिए नहीं मिलता है, तो उससे फिर कमजोरी होता है, तो खांसी होगा, बुखार होगा, तो उस घर घर आके चेक करके उठा के ले जाता है, उसको कोरोना में साबित कर देता है। उससे गाँव में लोग बहुत परेशान। मेरा नाम हुआ दीपनारायण पासवान और हम JJSS का प्रखंड सहयोगी में काम कर रहे हैं। और मेरा घर अमगाछी पंचायत वार्ड नंबर 9। मेरा उम्र 60 साल हो चुका है और अपने से हम बता रहे हैं, दुनिया लोग का हम देख रहे हैं अपना गांव में, जो कि अभी सरकार कह रहा है कि हम पेंशन दे रहे हैं, तो पेंशन सरकार नहीं दे रहा है, वो टेंशन दे रहा है। टेंशन इस बात का है कि जो अभी कह रहा है कि 4 महीना में पेंशन दे रहा है, और जिसका एडवाइस बन के जिला से वो पटना में पेमेंट होता है, उसका पेमेंट साल भर में कि 4 साल तक नहीं होता है। और वहाँ कौन पेंशनधारी 60 साल वाला चले जाएगा पटना पेमेंट कराने के लिए? वो लोग जो भूखा रहता है, उसका काम नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, कोई खेती गृहस्थी नहीं है, और लोग जो खट के खाता था, और सरकार जो कह रहा है कि हम काम दे रहे हैं हर व्यक्ति को, कोई काम नहीं है। और सरकार सिर्फ वो टीवी पर प्रचार दे रहा है कि हम काम हर लोग को दे रहे हैं, कहाँ कोई काम है। अभी जो 60 साल का उम्र है, उसका जो अभी घर में जो भूखे अभी रह रहा है, उसका पेंशन नहीं मिल रहा है। और 4-4 महीना से पेंशन जो दे रहा है 4 महीना पर, उसमें क्या हो रहा है कि कुछ आदमी का पेमेंट घुसता है और कुछ आदमी का नहीं। फिर उसके लिए लाइन लगता है। बूढ़ा आदमी जो थक जाता है, वो बैंक से घूर के पोस्ट मशीन में उसका अंगूठा नहीं आता है, उसका खून कमी हो जाता है खाने से। Is it end of the videos, Nancy? Yeah. We can move on to the resolutions. The resolutions. Concluding, what I would like to say is that all the people, जिन साथियों ने बोला है, एक तो पेंशन, एक तो उसका रकम बहुत कम है, 500। केंद्र सरकार तो डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें 300 देती है, कई राज्य तो वो 300 ही पास करती है, कई राज्य में 400 देते हैं, कई 500। इज एक्चुअली वेरी मीजरली अमाउंट। उसमें वृद्धि की एक बात सभी साथियों ने जो बात की, उसमें एक उभर कर आई है कि इससे कुछ चावल और गेहूं ही मिलता है राशन में, और उससे कुछ गुजारा नहीं हो सकता, दाल का क्या करेंगे, ये बड़ी समस्या है इसके लिए। मगर एक चीज में सुरेश बात कर रहे तो एक इशू, आई वुड लाइक टू रेस्पॉन्ड टू दैट। वो कह रहे थे कि भाई डिसेबिलिटी को जो है सेंटर लिस्ट में लाना चाहिए, विच इज एक्चुअली नॉट ए करेक्ट डिमांड, इट्स नॉट ए डेमोक्रेटिक डिमांड। हम नहीं कहेंगे कि कोई भी राज्य के पास से कोई भी सब्जेक्ट उठा के केंद्र में लाए। वो एक परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे, उसको आई अंडरस्टैंड, क्योंकि राज्य सरकार जो है रूल्स नहीं बना रहे, बहुत सारे चीज़ों को लेकर इशू है, करेक्ट। मगर केंद्र में भी जो है, आप ध्यान रखिए, 95 का एक्ट भी और 2016 का एक्ट भी वो बना है बिकॉज यू हैव साइंड इन इंटरनेशनल ट्रीटी। केंद्र सरकार की डिसेबिलिटी के ऊपर कानून नहीं बना सकती है, पर बनाया क्योंकि आपने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है। उस संधि के हस्ताक्षर के दबाव में आपने कानून बनाया, ना कि डिसेबल के लिए कुछ करने के लिए। करना है तो बहुत कुछ कर सकती है केंद्र सरकार, मगर कुछ नहीं करे। ना ही आपका पेंशन बढ़ा रही है, 2010 से लेकर आज तक 300 ही रकम में जो केंद्र सरकार जो पेंशन जो अटकी पड़ी है। सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ रेस्पॉन्स। नाउ आई वुड लाइक टू Nancy to put on the resolution and this thing for voting in this thing, please. Over to you, Nancy.
resolution is here, take particular care of the elderly at the risk by making geriatric care OPDs follow is COVID standard operating procedure. COVID standard operating procedure and make tests and treatment for senior citizens free. Increase the geriatric facilities for elderly in every district hospital across the country as per Maintenance and Welfare of Parents and Seniors Act. Provide a universal insurance of at least 5 lakhs for all elderly. Next slide. What is it? Extend the distribution of free grains and dal under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana beyond November 2020. Inclusion of elderly in beneficiaries list under the PMGKAY. This is a resolution. Universalize pensions coverage to all needy and poor elders. Increase amount and coverage to cover all needy and poor elders. Pension should be indexed to inflation or should be half of the minimum wage. Timely distribution every month for pensions to elders basis. Both central and state governments should increase budget support for pensions. Will Is it? start the voting now? Yes, we can put it for vote, please. People who are voting from the computers and laptops, scroll down to see more questions. Last session I'm not finished. People who are voting from their phones have to click on next option to see next question. जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर से वोट कर रहे हैं वो स्क्रॉल करके नीचे आए और सवाल देखने के लिए जो लोग फोन से वोट कर रहे हैं नेक्स्ट पे क्लिक करें बाकी के सवालों को देखने के लिए. Yeah, so you cut it. Yeah. You have 30 more seconds to vote. आपके पास 30 सेकंड है और वोट करने के लिए. You can share the results now. It's on your screen. Yes. जो पोलिंग हुआ है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पर्टिकुलर केयर ऑफ एल्डरली बाय मेकिंग geriatric OPDs and test and treatment for senior citizens free. It has received 100% polling, 100% वोटिंग हुआ है यानी 100% उसके फेवर में वोटिंग हुआ है. Increase facilities for elderly in district hospitals as per Maintenance and Welfare of Parents and Seniors Act. इसमें भी 100% वोटिंग जो है फेवर में हुआ है. There has been no negative voting, इसके खिलाफ कोई वोटिंग हुआ है. तीसरा जो इसमें सवाल है, प्रोवाइड यूनिवर्सल इंश्योरेंस ऑफ एटलीस्ट 5 लाख का इंश्योरेंस जो एल्डरली के लिए मांग की गई है. इसमें भी 100% लोगों ने इसके तरफ में वोट किया है. Can we have the next slide, please? Go to next. Extend the distribution of free grains and dal under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana and beyond 2010. 2020 के नवंबर से आगे बढ़ाने की जो बात की है उसको भी 100% लोगों ने जो उसका तरफ में वोट किया है. Is voting still in progress? It's voting still in progress. Yeah, it's still in progress. You have 30 more seconds to vote. आपके पास 30 सेकंड और है वोट करने के लिए. इसके जो नतीजे हैं इसमें एक्सटेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री ग्रेन्स एंड दाल अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें 100% लोगों ने उसकी तरफ में वोट किया है इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन.
Inclusion of elderly in beneficial list of PMGKY, 100% have voted in favor of the resolution. Next. ये एक और वोटिंग के लिए आया है, universalized pensions coverage to all needy and poor elders. Second question, increase amount and coverage to cover all needy and poor elders. And the third is pension should be indexed to inflation or should be half the minimum wage. ये हाँ या ना में जवाब देना है इसका. Timely distribution every month for pension to elders accounts. और last सवाल है, both central and state government should increase budget support for pensions. The poll ended. Yeah, it has ended. Okay. इसमें सभी जितने भी क्वेश्चंस आए सब में 100% वोटिंग हुआ है. Nobody has voted against the poll. So ये तमाम resolutions जो आपके सामने रखे हैं इस सेशन में, all of the resolutions have been adopted in this session. The elderly session has been adopted 100%. No vote has gone against any of these things. So मैं Paul साहब दिख रहे हैं मेरे को. Paul साहब, if you're there, you can end the session, or I can hear Nikhil actually somewhere. Because the entire session actually, the 3 hour, more than 3 hours actually, there were 4.5 hours actually in this session. So, Paul साहब, end करना चाहेंगे आप? Concluding remarks. Please go ahead, Murali sir. No. Please. आप कीजिए. You have been. I'd like to end the session. Paul Diwakar साहब, please end the session. Friends, it has been we apologize for this long mammoth session. It has gone on for 4 hours, more than 4 hours, almost 4 hours. But the range of vulnerabilities we have seen, they are extremely excruciating, anti-democratic, and they have not only not taken care of, but on the other hand, the double burden on the vulnerabilities we have seen, both as identities, Dalits, Adivasis, people with disabilities, aged, and occupationally as migrants. Most of them are informal sector workers, and we have seen they are at the front end of this COVID attack. I know as COVID warriors, most of them are actually having to go out when many of us are in the the safe of our houses. But it is these communities whose concerns have been completely neglected, even in the financial packages. And this is the most anti-democratic thing that we have seen, that the vulnerable who have to be protected are being abused and are exposed to the brunt of the COVID attack without no or very little of any protective measures. So therefore, we bring this notice to the parliamentarians who you have seen, you have heard some of them, Mr. Raja, saying this, but we would like the honorable members and the August House to really strengthen the foundation and make sure these concerns are taken up. Otherwise, I think how long will these people bear the brunt is something that we'll also have to see. So thank you all very much. Jai Bhim, Johar, and thank you for all the panelists, anchors who have so diligently and taken, some of them have actually taken a long distance. I do not know if there is few minutes. There was Manju Kasawa, who was supposed to be speaking to us. She has traveled for 80 kilometers to come to an internet area. I do not know, Murali Saab, I do not know whether we can allow Nancy, if she's there, I would really ask her to take, because she really traveled for 80 kilometers just to address us. I know time is really long. Annie Ji, do you think she's still there? If she is there, I would actually like her to speak, because from my side, if
Thank you. Thank you. Annie ji? Should expect it to a few minutes. Yes. If she's there, otherwise, can Nancy, do you think you can find her out? While you're searching for her, I would also like to thank our sign language interpreters. Actually, two of them were I'm here sorry. throughout this. No, I'm not. Yes. Preeti and Atul were there through this entire session actually, and this has been a session in which we had sign language interpreters throughout the session. I hope learning from this experience in the other sessions also, whenever we conduct in future, we'll be able to have hire the services of sign language interpreters to make this much more inclusive experience. Thank you. Thank you, Murli. I think that is very, very critical learning for all of us. It is so fascinating to watch them translate these very complex ideas into sign languages. Thank you very much. And also to all the interpreters. I'm sure it has been a very difficult time. So I do not see either Nancy or any of the organizers trying to see if we can find her. Annie Rajaji, I do not know if you're able to trace her, but otherwise. Annie, I can't find Annie. I don't see her. Annie's not there. Annie's not there in any case. Okay, but I maybe think Paul, we can conclude in that case. Yes. Thank you very much. Johar, Jai Bhim. Nancy can conclude. Thank you all for joining us. Our next session will start at 3 p.m. It's on civil liberties, laws and governance, and judiciary. Thank you. Thank you for all the organizers. They've done so well well throughout this entire 5-day period. They were really fantastic. Nancy, Mansi, all of you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye.